Hello, good evening everyone. I hope you all enjoy the whole workshop, and today is the last day and we are closing this workshop. Before closing, we understand how it is work in our body. Okay, Hyderabad, GT हुआ, gases हुआ. There is so many symptoms, but there is not a symptom. Your body start resetting your system. Okay, जहाँ पे कफ से लेकिन अस्थमा गया है, जहाँ एसिडिटी लेकिन हाइपरटेंशन और डायबिटीज हुआ है, जहाँ कॉन्स्टिपेशन रिस्क थायराइड हुआ है, वहाँ पे पूरा सिस्टम का रिसेटिंग हुआ है. तो आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हमें ये पता चलना चाहिए कि हमने जो भी सेट किया है उसको कैसे मेंटेन करें और किस तरह से आगे हम गट फूड को ले सकते हैं. ठीक है, चलो आई विल शेयर द स्लाइड. प्लीज मैसेज मी इट इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू. यस, माय स्लाइड इज विजिबल. चलो, नाउ द लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ आवर गट. इट्स 7 डेज प्लान. एक्चुअली मैंने पहले दिन भी आपको बोला था कि इट्स नॉट द 7 डेज, इट्स 2 वीक 2 मंथ्स प्लान. उसमें से हमने सिंगल सिंगल डेज को यूज किया और उसको हमने कंबाइंड फॉर्मेट दिया कि वहां हम गट को रिसेट कर सकते. गट को पूरा सेट करना डिफरेंट चीज है, रिसेट करना डिफरेंट चीज है, डिजीज को क्योर करना डिफरेंट चीज है. यहाँ मकसद ये था कि आपको ये पता चलना चाहिए कि एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ पे है और हम कहाँ पे रिपेयरिंग की जरूरत है. कई बार रॉन्ग मेडिसिन, रॉन्ग डायग्नोसिस की वजह से हम लेते ही रहते हैं और प्रॉब्लम वही नहीं है, प्रॉब्लम कहीं और है और वहां पे कांस्टेंट हमारा डिसीज आगे बढ़ते जा रहा है. ठीक है, तो डे 7 इज अ लॉन्ग टर्म गट प्लान. तो कैसे मैनेज करना है हमारे गट को? तो सबसे पहले गट फीड द गुड बैक्टीरिया, हमें अच्छे वाले बैक्टीरिया लेना है. प्रोटेक्ट द गट लाइनिंग, गट लाइनिंग को प्रोटेक्ट करना है. एंड रिड्यूस द इंफ्लेमेशन. तो किस तरह से प्लान करेंगे? फोकस कहाँ पे करना है? फोकस करना है बैलेंस गट माइक्रोबायोम. चलो ये थोड़ा समझ लो. बैलेंसिंग का मतलब क्या है? हम कोई भी फूड हैपाजार्डली नहीं खाएंगे, इज द फर्स्ट बैलेंस. ज्यादा गर्म नहीं खाना, इज द सेकंड बैलेंस. सीधा कोल्ड में नहीं लेना, मतलब पूरा कोल्ड वाला फूड ड्रिंक नहीं करना, दिस इज द थर्ड थिंग. इट इज इनफ टू मेंटेन योर बैलेंस गट मेथड. ठीक है, बहुत ज्यादा इसमें कुछ नहीं है. लेकिन हम गरम गरम स्पाइसेस खाते हैं या तो कुछ बहुत ही गरम खाना खा लिया, तो हमारा बकल म्यूकोजा में जो भी अच्छे वाले बैक्टीरिया है वो मर जाते हैं बिकॉज ऑफ द वार्म फूड. कई बार गर्म चाय पीने से भी हमारे टंग के ऊपर इफेक्ट आता है, तो इतना वार्म नहीं पीना चाहिए कि आपके बकल पे इफेक्ट हो. वैसे हमारा बकल म्यूकोसा बहुत ही स्ट्रांग है, सबसे ज्यादा हीलिंग मैकेनिज्म बकल में है. ठीक है, अगर वहां पे कोई अल्सर होता है या तो जिंजिवाइटिस होता है, तो उसका हीलिंग स्ट्रक्चर फास्ट होता है अगर वो नॉन कैंसरस है तो. अगर कैंसरस है तो हील ही नहीं होगा, क्योंकि कैंसर का मतलब ये बैक्टीरिया नहीं रहेंगे. तो बैलेंस करना है. तो ये तीन चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है: नहीं गर्म खाना, नहीं सीधा ठंडा खाना, और स्पाइसी से नहीं करना. बहुत सारे स्पाइसी से गट को बनाता है और बहुत सारे स्पाइसी से जो गट बैक्टीरिया को डिसोल्व मतलब मारता है, वो उसको खत्म करता है. और इसका कलेक्शन तीन जगह से है. हमारे लिप के आसपास, लिप का इनर एरिया है, वो अलग बैक्टीरिया रखता है. हमारे टीथ के नीचे वाला एरिया जो एग्जिट टंग के पीछे है, वो अलग बैक्टीरिया रखता है. और हमारे टंग के पीछे वाला जहाँ पे हमें टेस्ट बड पता चलता है, तो तीनों में अलग अलग बैक्टीरिया है. और तीनों डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करते हैं हमारे डियोडिनम, जेजुनम और इलियम. तो स्मॉल इंटेस्टाइन के जो तीन पार्ट से वहां के बैक्टीरियल कॉलोनी को यहाँ पे रेसिडेंशियल होता है. ठीक है, ये प्रोसेस क्या है कि पूरा एक टाउन है बहुत बड़ा, लेकिन उसका मैनेजमेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल से होता है या तो नगर पालिका करती है. उसी तरह से हमारे गट के बैक्टीरिया का प्रॉपर फ्लोरा है, वो हमारे माउथ से स्टार्ट होता है. तो कोई भी स्पाइसी, इतना स्पाइसी मत खाए कि आपके मुंह में जलन हो. दूसरी चीज, इतना गर्म नहीं खाना. तीसरी चीज, इतना ठंडा नहीं खाना. इज इनफ टू मेंटेन योर बैलेंस. ठीक है. सेकेंड थिंग इज द गुड डाइजेशन. अगर डाइजेशन कहीं ना कहीं खराब हो रहा है तो प्लीज लुक फॉर योर डिजीज एंड ऑल्सो विथ योर फूड, कि वहां पे आपने कोई गलती हो रही है कि नहीं हो रही. स्ट्रॉन्ग इंटेस्टाइनल लाइनिंग. जब भी आपका स्किन ड्राई हो, हेयर ड्राई हो, लिप के अराउंड आपको ड्राइनेस फील हो, तो समझना कि आपके इंटेस्टाइन कहीं ना कहीं ड्राई है.
हॉल स्किन में अगर ड्राइनेस आता है तो डेफिनेटली आपकी इनर लाइनिंग है वहां पे कहीं ना कहीं लीक है। इन द फॉर्म ऑफ द लो इन्फ्लामेशन, लो इन्फ्लामेशन इज मोर डेंजरस रादर देन द स्ट्रॉन्ग इन्फ्लामेशन। लो इन्फ्लामेशन का रिपोर्ट में कुछ नहीं पता चलता। अगर आपके बॉडी में कहीं ना कहीं हाई इन्फ्लामेशन है तो आपका ईएसआर बढ़ा हुआ आएगा, आपका ब्लड रिपोर्ट में कोई चेंजेस आएंगे, आपके हार्ट में कोई चेंजेस दिखेगा, लेकिन इन केस ऑफ द लो इन्फ्लामेशन इतना आपको पता नहीं चलता और धीरे 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 करके लॉन्ग टर्म डिजीज में चला जाता है। नाउ द हेल्दी गट हैबिट्स, मॉर्निंग में वार्म वाटर लेना है। कितना वार्म लेना है? एकदम हल्का गर्म लेना है अकॉर्डिंग टू सीजन। हीट में वार्म नहीं लेना, कोल्ड में वार्म लेना है और मानसून में वार्म लेना है। ठीक है। किसके साथ ले सकते हो? फेन्यूग्रीक सीड के साथ ले सकते हो। दिस इज द सेकंड फेज ऑफ द फर्मेंटेड फूड फॉर द हेल्दीएस्ट गट। ठीक है। फेन्यूग्रीक सीड ले सकते हो या तो फिर आप फ्लेक्स सीड भी ले सकते हो, लेकिन अच्छा माना जाता है। लेमन किसको यूज करना है? जिसका बॉडी ज्यादा एसिड फील करता हो उसको मॉर्निंग में लेमन नहीं लेना चाहिए, उसको बिफोर मील लेना चाहिए। लेकिन जिसका बॉडी ज्यादा गैसियस फील करता हो या तो कॉन्स्टिपेटेड है, ये दोनों सिम्टम समझना है। सिर्फ कॉन्स्टिपेशन है तो लेमन ले सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन नहीं है तो आप सिर्फ फेन्यूग्रीक ले सकते हैं। फेन्यूग्रीक के साथ अजवाइन, जीरा, बहुत सारा सीड फर्मेंटेशन है, मैं डेली रूटीनली डाइट में देती हूँ। लेकिन यहाँ पे सीड का जो सिलेक्शन है प्लीज अपने अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके लेना। आप जिससे डाइट कंसल्ट करते हो उसके लिए, जो मेरे रेगुलर पेशेंट है उसको मैं खुद एडवाइस करती हूँ। जो न्यू पेशेंट है प्लीज ऐसे हैफाजर्डली कोई सीड नहीं लेना। मैं सीड आपको पढ़ाऊंगी आज। यहाँ पे हॉल डाइट में हमने कहीं पे सीड का यूज नहीं किया। ठीक है। बिकॉज सीड का टिपिकल स्पाइसिस है, सीड स्पेसिफिक हॉर्मोन से जुड़े हैं। सीड बोले तो ईच एंड एवरी सीड हैव ए कैपेसिटी टू बिल्ड सो बिग ट्री। ठीक है। अगर हम बनियान ट्री देखते हैं तो बहुत ही छोटा सीड है और उसमें लाखों तक जिंदा रहे उतना, लाखों साल तक जिंदा रहे उतना बनियान बनता है। और बहुत ही बड़ा स्ट्रक्चर रहता है, पूरा वृक्ष बन जाता है। तो छोटे से सीड को कम मत समझना। मतलब एक हमें एक चपटी भर के या तो स्पून भर के अजवाइन ले लिया या तो जीरा ले लिया, यू आर नॉट टेकिंग जस्ट वन स्पून ऑफ द जीरा, यू आर टेकिंग द होल फार्मिंग एरिया ऑफ द जीरा। ठीक है। वन सीड से कितने सारे छोटे छोटे पौधे हम उगा सकते हैं, उसमें बहुत सारा जीरा आ सकता है। तो वन सीड में देर इज अ लॉट्स ऑफ कैपेसिटी। व्हेन वी आर गोइंग विद द फर्मेंटेशन स्टार्ट द एक्टिवेशन ऑफ द नॉन न्यूट्रिएंट एंजाइम। तो वहां पे सीड का फर्मेंटेशन है, अपने आप से नहीं लेना, आपकी तासीर के हिसाब से, आपकी अकॉर्डिंग डॉक्टर की एडवाइस के हिसाब से लेना है। इंक्लूडिंग द फाइबर इन योर डाइट, सबसे बेस्ट है फ्रूट्स। कुछ भी ना करें, सिर्फ फ्रूट्स खाए। ठीक है। मिलेट्स खा सकते हैं लेकिन आई एम नॉट एडवाइजिंग टू टेक एनी फूड इन मॉर्निंग। फ्रूट इज ऑलवेज बेटर to reduce acid inflammation, to help to digestion easy, and the one more best thing to repair your gut lining, whatever is the rest of food on the evening time. ज्यादातर प्रॉब्लम क्या रहता है? हमारा इवनिंग मील है ऑलवेज डिफर रहता है। तो मॉर्निंग में अगर हम ज्यादा फूड लेंगे तो हमारा इवनिंग में स्टोर होता है। वेट लॉस के लिए भी सुबह में फ्रूट्स खाने चाहिए और हार्मोनल डिसबैलेंस को भी रिपेयर करने के लिए फ्रूट्स खाने चाहिए। रिगार्डिंग हाइड्रेशन, 3 लीटर वाटर इज ऑलवेज नीडेड टू योर बॉडी। याद करके पानी पीना चाहिए। ठीक है। और इतना पानी पियो कि आपके बॉडी में रिहाइड्रेशन सिस्टम कंटिन्यू रहे। यहाँ पे 3 सिस्टम समझ लो: हाइड्रेशन, रिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन, यू हाइड्रेशन, न्यूट्रा हाइड्रेशन। एक अलग अलग टर्मिनोलॉजी है, वो दिखाता है कि आपके बॉडी में सिस्टम कैसे चलती है। हाइड्रेशन का मतलब पानी पीना, रिहाइड्रेशन का मतलब रिफिल्टरेशन करना, डिहाइड्रेशन का मतलब बॉडी खत्म हो गया, न्यूट्रा हाइड्रेशन का मतलब आप पानी के साथ कुछ ऐड करके पियो जो आपको न्यूट्रा सप्लीमेंट दे। यू हाइड्रेशन का मतलब आपको शरीर की जरूरत से ज्यादा पानी की जरूरत है। ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रेट करना है, यू हैव टू ड्रिंक मोर देन 2.5 to 3 लीटर ऑफ वाटर। द बैलेंस मील, प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक हमने अच्छी तरह से डे 4 में पढ़ा है कि व्हाट इज द प्रीबायोटिक एंड व्हाट इज द प्रोबायोटिक। एंड वन मोर थिंग इज द polyphenol food. What is the polyphenol? The food have a capacity with the fighting agent to create against the infection. ठीक है। टर्मरिक है, ग्रीन टी है, बेरीज है, जहाँ पे कलर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वहां पे पॉलीफिनोल फूड्स बोलते हैं। पॉलीफिनोल फूड्स क्या करते हैं?
वो इन्फेक्शन के सामने फाइट करते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में हमारे गट बैक्टीरिया को हेल्प करते हैं. इज अ सिमिलर स्लाइड. आई जस्ट एड वन मोर थिंग्स रिगार्डिंग द लाइफस्टाइल एंड लॉन्ग टर्म बेनिफिट. मैं सबको बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ रिगार्डिंग द फिजिकल एक्टिविटी. चाहे कितना भी अच्छा डाइट ले ले, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते तो आपका मेटाबॉलिज्म है वो गट के बैक्टीरिया, पैरासाइट और प्रोटोजुआ, फंगाई के हिसाब से चलता है. ठीक है. बैक्टीरिया है वो फंगस खाता है, फंगस से पैरासाइट खाता है, पैरासाइट वायरस खाता है, वायरस बैक्टीरिया खाता है. इन सबको मूव होने की आदत है. आदत क्यों है? क्योंकि वो जब चलेंगे, वो मूविंग होंगे, तभी जाके उसका स्ट्रक्चर चेंज होता है. हम बोलते हैं वायरस में, स्पेसिफिक वायरस में बोलते हैं कि आरएनए प्रोडक्शन वायरस था, डीएनए प्रोडक्शन वायरस था. तो उसका मतलब क्या है कि जब भी हमें कोई वायरल इन्फेक्शन लगता है तो 90% चांसेस है कि हमें ऑटोइम्यून डिजीज होगा, अगर वो आरएनए से डीएनए प्रोफाइल में जाता है. अगर वो बार बार वायरस लोड आता है और बॉडी का बैक्टीरियल फिनोमिना को डैमेज करते हैं तो डेफिनेटली वो अस्थमेटिक अटैक क्रिएट करता है. तो कोई भी वायरल वायरल नहीं है. सिर्फ वायरल तो बोलना ही नहीं है, बिकॉज वायरल क्रिएटिंग सो मेनी डेंजरस ऑटोइम्यून. डेंगू से ज्यादातर टाइप 1 डायबिटीज होता है. डेंगू बहुत ही सिंपल दिखता है, लेकिन मेरे पास जितने भी बच्चे हैं उसकी अगर बैक ऑफ हिस्ट्री देखें तो 30% आर डायग्नोज आफ्टर द कंप्लीटिंग द ट्रीटमेंट ऑफ द डेंगू. तो वायरस सिंपल वायरस नहीं. रिपीटेड कफ कोल्ड होना इज सिंपल एज इन्फ्लुएंजा? नो, इज नॉट अ सिंपल एज इन्फ्लुएंजा. इट्स क्रिएट सम मेटल फॉर्मेशन इन योर लंग्स एंड आफ्टर लॉन्ग पीरियड इज क्रिएट द अस्थमेटिक. अगर कोई ऐसा वायरस आता है जो आपकी किडनी को डैमेज करता है तो बच्चों में नेफ्रोटिक सिंड्रोम और एडल्ट को अल्टरेशन ऑफ किडनी, इट्स डेंजरस ऑटोइम्यून. वहां पे लाइफस्टाइल डिजीज से भी ज्यादा खतरा है, पेशेंट को डायलिसिस के ऊपर लेके जाना पड़ता है. तो सिंपलेस्ट वायरस नहीं है. ठीक है. कहीं पे भी इंफेक्शन है तो उसका सबसे बेस्ट तरीका है एक्सरसाइज. एक्सरसाइज के अलावा कोई भी मैकेनिज्म नहीं है. यू हैव टू डू, यू शुड डू, बिकॉज देयर इज अ नो ऑप्शन. डाइट में बहुत सारे ऑप्शन है. नॉट ओनली मी, वर्ल्ड में बहुत सारे डाइटिशियन भी है, बहुत सारे शेफ भी है, और ईच एंड एवरी होम में मदर है जो दुनिया की सबसे बेस्ट कुक माना जाता है. तो जो खाना बनता है उसमें आपको ऑप्शन मिलेगा. ठीक है. लेकिन एक्सरसाइज में ऑप्शन नहीं मिलेगा. So this is my humble request to everyone. Please do everyday activity because without activity you can't mobilize your gut micro. अगर आज अच्छा कर लिया तो हफ्ते 2 हफ्ते के बाद वो 20 डेज तक जिंदा रहते हैं. ठीक है. तो 20 डेज आपको बहुत ही अच्छा, बहुत मजा आएगा. यू एंजॉय वेरी मच इन योर रूटीन लाइफ. लेकिन वो जैसे जैसे डिस्टर्ब होते जाएंगे, यू बैक टू बैक जहाँ थे वहां वापस चले जाते. कोई स्ट्रेस आ गया, कोई खाना मैनेज नहीं हुआ, कहीं से फूड आके खा लिया, कोई तीखा खाना खा लिया, कोई गर्म फूड खा लिया, तो सीधा आपके गट बैक्टीरिया जो अच्छे वाले बने हैं. आप ऐसा सोचो कि आपके घर कोई न्यूबॉर्न बेबी आया है. ठीक है. इट्स नीड सम टाइम टू रिपेयर एंड रिबिल्डिंग योर सपोर्ट. ठीक है. तो वही तरीके से आपके बैक्टीरिया को भी जरूरत है. अगर हम नहीं देंगे तो वापस से डेड हो जाएंगे, इन्फेंट में ही मर जाएंगे और उसकी कॉलोनीज नहीं बनेगी. हमें बहुत सारे चाहिए. ठीक है. यहाँ पे हमने बीज रोपे हैं कि अच्छे वाले बैक्टीरिया के बीज डाले हैं तो इतना बड़ा बन जाए कि हमारा खुद का बॉडी ऑटोफेसी में चला जाए, खुद रिपेयर हो. हमें सिर्फ सपोर्ट करना है. हमें न तो मेडिसिन की जरूरत है, न तो हमें कोई रिपोर्ट कराने की जरूरत है, न तो हमें कोई इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है. बॉडी खुद रिपेयर होगी. एंड आई नो कि अगर आप प्रॉपरली करते हो तो डेफिनेटली मैजिक होगा. पहले वेट लॉस नहीं होता था, अभी इतना वेट लॉस होगा कि आपको लगेगा कि क्यों इतना वेट लॉस हो रहा है. दैट मच फिनोमिना इज अकर इन द गट माइक्रोबायोम. स्ट्रेस मैनेजमेंट, यू हैव टू डू नेचुरल स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोसेस. ठीक है. मैंने 2-3 चीजें आपको लास्ट 2 सेशन में भी बताया कि कोई भी स्ट्रेस के पीछे फियर है. अगर फियर को आइडेंटिफाई कर लोगे तो स्ट्रेस चला जाएगा. सेकंड थिंग से यू हैव टू स्टार्ट द ग्रेटिट्यूड to yourself also and gratitude to other also, because whenever we go with the gratitude, आभार करते हैं किसी का, हम धन्यवाद मानते हैं तो हमारे बॉडी के बहुत सारे हॉर्मोन्स है और ऑटोमेटिक फेज में चले जाते हैं, और जब वो चले जाते हैं तो डेफिनेटली हमारा स्ट्रेस रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है. सो these are the very simplest phenomena but you have to follow the rules of the घटना प्रोफाइल. चलो ये आपको थोड़ा एक स्लाइड को समझ ले.
Scientific explanation of the gut microbiome. Why the gut care is very much essential for the health. Actually नहीं पढ़ाया जाता, ना तो मेडिकल साइंस में पढ़ाया जाता है, ना तो होम्योपैथिक में पढ़ाते हैं, ना तो आयुर्वेद में पढ़ाते हैं. गट इज अ वेरी डिफरेंट फिनोमिना. अभी तो गट पे बहुत सारे रिसर्च हो रहे हैं. आई ऑल्सो पार्टिसिपेट इन सो मेनी रिसर्च. बट गट इज द मेन पार्ट फॉर होल सिस्टम, क्योंकि पूरा ह्यूमन बॉडी खाने से लेके निकालने तक ही सिस्टम में है. हम जो खाएंगे उसी का डाइजेशन होगा, उसी से न्यूट्रिएंट बनेंगे, उसी से हॉर्मोन्स बनेगा, उसी से आपका बॉडी मेकअप होगा. और जो कचरा निकलेगा वो डिसाइड करेगा कि एक्चुअली अंदर क्या रहा है. द सिस्टम, जो खाया जो निकला उसके बीच में जो बचा वो हमारे गट माइक्रोबायोम. अगर उसको सही करना है तो इनपुट पे फोकस करना है, बिकॉज आउटपुट इज नॉट इन अवर हैंड. ठीक है. हम चाह के भी उसको चेंज नहीं कर सकते अगर हम अपर सिस्टम को चेंज नहीं करते. So you have to eat properly, mindfully, and carefully when we are go with the gut care essential. The gut microbiome कितने होते हैं? 100 ट्रिलियन माइक्रोबायोम से 100,000 प्लस डिफरेंट स्पेसीज है. यहाँ पे हमने मोर देन 6 to 9, मोर देन 70 to 80 स्पीसीज बनाए. ठीक है. ईच एंड एवरी ड्रिंक में हमने 7 डिफरेंट कॉलोनीज बनाई. आपको बहुत मजा आएगा. डिफरेंट डिफरेंट कांजी में अलग अलग बैक्टीरिया बनते हैं. द्राक्षासव सबसे बेस्ट माना जाता है टू प्रिपेयरिंग द बेस्ट कॉलोनीज. वो फास्ट कॉलोनीज बनाते हैं बिकॉज उसमें शुगर मोलाज भी होता है, और मोलाज की वजह से बैक्टीरियोजेनिक इफेक्ट बहुत फास्ट आता है. Kombucha is also very good, but kombucha sometimes is creating some bitter taste. It's just like a fruit beer, but we have to prepare it the vinegar form in the acidic formation. But many of the time मैंने देखा कि आप लोगों का वो पिक्चर सही नहीं था, तो आपने वो प्रॉपर टेस्ट नहीं आइडेंटिफाई कर पाई. कंबुचा में 9 से भी ज्यादा बैक्टीरियोलॉजिकल इफेक्ट है. तो हमने जो पूरा प्रोसेस किया 7 डेज में, उसमें 70 to 80 स्पीसीज हमने डिफरेंट पिए. ज्यादातर ड्रिंक के दौरान जो जाते हैं वो सीधा बकल म्यूकोजा से हमारे स्टमक तक जाता है. स्टमक में बहुत सारे स्पेसिफिक एसिड रहता है जो इस बैक्टीरिया को नहीं मारते, और उसके लिए डाइजेस्टिव एंजाइम बने हैं जो इंटेस्टाइन से भी रिलीव होते हैं, स्टमक से भी रिलीव होते हैं, लीवर से भी रिलीव होते हैं, पेनक्रेटिक एंजाइम से भी रिलीव होते हैं, और वो हमारे मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं. ठीक है. द सेकेंड पार्ट, हाउ गट वर्क्स. गट ब्रेक डाउन द फूड्स. हम जो भी खाते हैं उसको तोड़ते हैं, एब्सॉर्ब द न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन को एब्सॉर्ब करते हैं. नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग्स इज प्रोड्यूस द विटामिन. इसीलिए मल्टीविटामिन की जरूरत नहीं होती. अगर गट सही है तो कोई भी विटामिन बाहर से लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपका गट ही विटामिन बनाता है. डेफिनेटली बनाता है. सारे विटामिन वहीं से बनते हैं. इसीलिए कोई इंसान अगर बहुत मिनिमल फूड पे है फिर भी उसका न्यूट्रिएंट रिपोर्ट बहुत ही अच्छा आता है. तो बिल्ड इम्यूनिटी, इम्यूनिटी बढ़ाता है और हमारे मूड को कंट्रोल करता है. तो गट्स सीधा हॉर्मोन्स, गट सीधा माइंड, गट सीधा इम्यून सिस्टम, और गट सीधा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी. तो सीधा काम करता है. गट ब्रेन एक्सिस कल हमने बहुत डीपली पढ़ा है. एक ब्रेन का सिग्नल मिलता है जो हमारे मूड स्ट्रेस को मैनेज करते हैं, स्लीप को फोकस करते हैं, और इम्पैक्टफुली फोकस कराते हैं. ठीक है. अगर आप कुछ पढ़ते हो तो आपको पता चलता है कि यस, आपको ये पढ़ना चाहिए, और आपका माइंड उसी के साथ कोरिलेट करता है. गट की लाइनिंग बनाता है, हेल्दी लाइनिंग है. और लीकी गट है. लीकी गट बहुत ही कॉमन माना जाता है कि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली आपके गट में इश्यू है. लेकिन अगर आप इश्यू को नजरअंदाज कर रहे हो तो वो धीरे 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 आगे जाके डेंजरस डिजीज में कन्वर्ट होता है. हाउ वी कैन केयर अवर गट? You have to eat the fiber and prebiotics, the combination of the pro and pre, and we also learn about the symbiotic, it's the combination of the both. स्टे हाइड्रेटेड, पानी ज्यादा पीना है, स्ट्रेस फ्री रहना है, स्लीप प्रॉपर करना है. कई बार बहुत सारे लोगों को स्लीप के लिए एक बहुत ही इश्यू है कि हमको प्रॉपर स्लीप करने का टाइम नहीं मिलता. लेकिन ये बहुत ही गलत चीज है. अगर हम सही टाइम पे सोते हैं, 6 to 7 आवर स्लीप करते हैं, तो हमारा रेस्ट ऑफ 16 आवर जो बचता है उसमें हम 24 आवर्स का प्रोडक्शन दे सकते हैं. उतना हमारा ब्रेन रिलैक्स हो जाता है. तो प्लीज सो जाओ. ठीक है. क्योंकि नींद ही आपका सबसे बड़ा बेस्ट फ्रेंड है.
जब आपको रिपेयर होना है। अगर आपको हील करना है तो नीड टू स्लीप। ठीक है, जितना अच्छा सोओगे उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बच्चे के जैसे सोना है। देयर इज 3 mechanism फॉर लिविंग अ लाइफ। बच्चे जैसा सोना है, युवानी जैसा काम करना है, संत जैसा खाना। ठीक है, अगर ये 3 चीजों को हम लाइफ लॉन्ग फॉलो करते हैं तो वी प्रिवेंट 90% ऑफ डिजीज। ठीक है, हमें कुछ भी जरूरत नहीं है। बच्चे की तरह सो जाओ, जैसे बैठे बैठे सो जाते हैं ऐसे ही किसी के गोदी में सो जाएंगे, किसी के घर पे जाएंगे तो वहीं पे भी सो जाएंगे। इट्स अ गुड स्लीप टू रिवाइव सो मेनी हार्मोन्स। ओके, चलो नाउ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एडवांस गट माइक्रोबायोम। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है कि प्रोटीन कितना खाना चाहिए, क्यों खाना चाहिए, और प्रोटीन की रिक्वायरमेंट क्या है। एक्चुअली इज अ मॉडर्न फार्मेकोलॉजी एंड मॉडर्न medicology are advising the high protein in your diet. But now we understand the how protein, carbs, minerals, vitamins, fibers affect completely in our body. ठीक है, हम खाते ही है, नहीं खाते ऐसा नहीं है, लेकिन कभी रॉन्ग डाइट फॉलो नहीं करना। जो मेरे मेरे खुद के पेशेंट है, उसको तो मैं एडवाइस करती हूँ कि बिना कोई नॉलेज कोई भी डाइट कोई भी फूड स्टार्ट नहीं करना। लेकिन जो न्यू मेंबर स्पेसिफिक गट रिसर्च में जुड़ा है उसके लिए भी एडवाइस है कि कभी भी ऐसी कोई भी डाइट को फॉलो नहीं करना चाहिए। आई एम नॉट अपोज टू एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और नॉट अपोज टू एनी डॉक्टर और एनी डाइटिशियन, बट विदाउट नोइंगली एनीवन डू नॉट फॉलो द जनरलाइज सिस्टम। ठीक है, क्योंकि इसका बॉडी किस तरह से रिएक्शन देगा वो आपको नहीं पता चलेगा, और अगर आपका बॉडी पूरा चेंज हो गया तो देर इज अ वेरी हार्ड टू कम विद द रिसेटिंग सिस्टम। द कॉम्प्लेक्स ecosystem of trillion of microorganism living in the digestive tract. It's a composition and diversity both। वो बनते भी है, अलग अलग फॉर्म में रहते भी है, और एक साथ एक दूसरे से जुड़ते भी है। ठीक है, वो खुद एंटीजन एंटीबॉडी बना देता है। ठीक है, आपको पता है कि अगर आपके बॉडी में कोई इन्फेक्शन आता है तो इन्फेक्शन चेक नहीं किया जाता, उसका एंटीबॉडी चेक किया जाता है। एंटीबॉडी से पता चलता है कि यस डेंगू के एंटीबॉडी बने, दैट मीन्स के डेंगू का वायरस है। टाइफाइड के एंटीबॉडी बने, दैट मीन्स के टाइफाइड का वायरस है। दैट मीन्स your parasite, bacteria, and virus have a capacity to produce the antibody against the infection. And on that time, you have to support your bacteria, virus, fungi, and archaea, but do not disturb the flora of the intestine. ठीक है, तो वहां पे बहुत ही मिनिमल मेडिकेशन से आप बाहर आ सकते हो। वैसे कोई भी बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन है तो वी हैव ए वेरी वंडरफुल डाइट प्रोसेस कि आप आराम से वहां से बाहर आ सकते हो। ठीक है, तो देर इज ए लॉट्स ऑफ बैक्टीरियोजेनिक इफेक्ट एंड द गुड बैक्टीरिया। मैंने यहाँ पे 2-3 नाम दिए हैं जो हमने ऑलरेडी खाए हैं। चलो नाउ द अंडरस्टैंडिंग अबाउट द प्रोटीन फर्मेंटेशन। इस प्रोग्राम में हमने प्रोटीन को फर्मेंट नहीं किया। वैसे फर्मेंटेशन में प्रोटीन का इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज द प्रोटीन फर्मेंटेशन अकर्स व्हेन अनडाइजेस्टेड प्रोटीन रीच द कॉलोनी एंड इज ब्रोकन डाउन बाय द गट बैक्टीरिया। तो क्या करेगा? इस प्रोड्यूस द हार्मफुल मेटाबोलाइज प्रोडक्शन। इस प्रोड्यूस द एमोनिया, हाइड्रोजन, इंडोल्स, फिनोल, इंडोल्स एंड हाइड्रोजन सल्फाइड is very harmful metabolic bacteria, and is creating high protein, excess protein fermentation, creating the colon cancer, inflammatory bowel disease, the leaky gut and chronic inflammation। और ये कब होगा? when you are in protein diet, when you are low fiber, poor digestion and low stomach acid। So what is the key concept for that? Too much protein fermentation is the toxin metabolic damage to your gut lining। ये स्लाइड आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार हम नोइंगली और अननोइंगली प्रोटीन के ऊपर भार देते हैं। हम प्रोटीन खाते जरूर है, लेकिन अगर आपका गट सही नहीं हुआ तो प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होगा। वो प्रोटीन खुद इंडाइजेशन बनाएगा और गट में जाके वो फर्मेंट होता है। ये बात हमेशा याद रखना कि जो भी चीज हम खाते हैं वो गट में फर्मेंट जरूर होता है, क्योंकि हमने सुबह जो खाया है वो दूसरे दिन सुबह तक पूरे ट्रैक में रहता है। तो 24 आवर्स अगर बाहर वेजिटेबल पड़ा है तो वो फर्मेंट होगा। तो आपके बॉडी में तो बहुत हीट है, बहुत गर्मी है, तो वो डेफिनेटली फर्मेंट होता है। इट्स क्रिएटिंग सम फर्मेंटेशन, एंड एक फर्मेंटेड जो चीज है वो सीधा हमारे बॉडी के ऊपर काम करता है। तो टू मच हाई नहीं लेना।
दूसरी चीज, जब भी लेते हो फाइबर के साथ लेना, फाइबर के साथ स्प्राउट किया, फाइबर के साथ लिया, इज अ गुड। ठीक है। उस फाइबर के साथ उसमें थोड़ा सा लेमन मसाला डाल के लो, इज ए गुड। उसको थोड़ा बॉईल करके लो, इज ऑल्सो गुड। कच्चा बहुत ही हेल्पफुल है, वो हाई फाइबर में जाता है, लेकिन बिना फाइबर नहीं लेना, वेजिटेबल के बिना नहीं लेना, क्योंकि उसको लाइनिंग में ब्लॉक कर देगा। तो जब भी स्प्राउट खाते हैं सलाद डाल के खाएं। क्वांटिटी आपके बॉडी वेट के हिसाब से ले, ज्यादा प्रोटीन खाने से ज्यादा बेनिफिट ऐसा नहीं है। प्रोटीन का इक्वल रेशियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो दो तीन चीजें समझ ले यहाँ पे। बहुत बार डायबिटिक पेशेंट को कार्ब्स पे कंट्रोल किया जाता है, ठीक है, इज अ गुड कि हम कार्ब्स पे कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन उल्टा प्रॉब्लम क्या रहता है, प्रोटीन ज्यादा जाता जाए। तो जैसे ही प्रोटीन खाना ज्यादा स्टार्ट करते हैं, विद इन 3 to 4 years के बाद उसको यूरिक एसिड आ जाता है, इज एक्सेस ऑफ प्रोटीन इन योर ब्लड विच किडनी इज नॉट फिल्टर आउट प्रॉपरली। तो यूरिक एसिड आ गया। नाउ what happened, you couldn't, matlab you can't eat the protein properly, you can't eat the carb properly. What is the rest of vitamins and minerals for you? Now you have a only option for fruit and vegetable. So before that, going the disease in more dangerous situation, you have to select the balanced food. Please take advice from your expert कि मैं कहाँ क्या खाऊं और कैसे खाऊं। वैसे मैं जो एडवाइस करती हूँ बहुत ही बैलेंस फूड है, अगर लाइफ लॉन्ग ऐसे ही खाना है। 25 प्रोपोर्शन मील है, 1 कटोरी सब्जी, 1 कटोरी दाल, 1 कटोरी राइस, इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोटीन, कार्ब्स एंड कुक फूड। तो इसी तरह से खाना चाहिए। बच्चों को भी हाई प्रोटीन पे फोकस नहीं करना। फर्मेंटेड प्रोटीन क्या है, फर्मेंटेड प्रोटीन हम स्प्राउट को बोलते हैं, इज अ हॉल फर्मेंटेशन। लेकिन अगर दाल को भिगोया, दाल को क्रश किया, उसका फर्मेंटेशन लाया, तो इजिएस्ट डाइजेस्टेबल नहीं है, उसका एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को फॉलो करके उसके बैक्टीरियोजेनिक इफेक्ट को रिड्यूस करना है, उसी के बाद उसको खाना चाहिए। ठीक है। इसीलिए यहाँ पे हमने प्रोटीन फर्मेंटेशन नहीं लिया, तीन फर्मेंटेशन नहीं लिया, प्रोटीन, सीड एंड फ्लावर। तो ये तीनों का बहुत ही स्पेशल सिलेक्शन है। ठीक है, अपने आपके डिजीज के हिसाब से, आपकी तासीर के हिसाब से आपके डॉक्टर को पूछ के ही ये फर्मेंटेशन को यूज करना है। बल्कि उसके अंदर बहुत ही अच्छे बैक्टीरिया है, और माना जाता है कि बहुत सारे डिजीज में क्योरिंग के लिए हेल्प करता है, बट वी हैव टू फोकस ऑन द प्रॉपरली अकॉर्डिंग टू योर डिजीज। तो फाइबर फर्मेंटेशन जो हम प्लांट को फाइबर कहते हैं, ठीक है। चलो हमने यहाँ पे क्या लिया था, इज अ हेल्दी फर्मेंटेशन। जब भी हम फाइबर को फर्मेंट करते हैं, इज क्रिएटिंग द हेल्दीएस्ट बैक्टीरिया, इट्स नेवर गो विद द डेंजरस बैक्टीरिया। लेकिन अगर किसी को फर्मेंटेशन के बाद किसी को कफ आया, किसी को कांस्टेंट स्नीजिंग स्टार्ट हो गया, किसी को म्यूकस फील हुआ कि थ्रोट में म्यूकस आया, नेजल में म्यूकस आया, हेडेक आया, तो उसका मतलब क्या है कि आपने जो फर्मेंटेशन किया था उसके बैक्टीरिया उसकी खुद की जगह बना रहा है। हेडेक तो सबको आया होगा, बिकॉज हेडेक आना बहुत ही कॉमन है और बहुत ही हेल्दीएस्ट माना जाता है व्हेन वी आर कंप्लीटली रिसेटिंग योर गट। यहाँ पे इसीलिए जल्दी आ गया, जो 2 मंथ करना था वो हमने एक वीक में कंप्लीट कर लिया। अदरवाइज क्या होता है, धीरे धीरे बॉडी को सेट करते जाओ, सेट करते जाओ। एक ड्रिंक एक वीक पियो, दूसरे वीक में दूसरा ड्रिंक को ऐड करो, तीसरे वीक में तीसरा ड्रिंक को ऐड करो, चौथे वीक पे चौथा। ऐसे करते करते 8 टोटल ड्रिंक्स है। ठीक है, अलग अलग फॉर्म में वो ड्रिंक को हमें यूज करना है। तो उसमें हेडेक नहीं आता, इट्स वेरी इजीएस्ट प्रोसेस। लेकिन हम फास्ट बैक्टीरिया को ग्रो किया, तो उसकी वजह से हेडेक आया। तो जब भी ये फर्मेंटेशन जाता है बॉडी में, तो हमारा बॉडी ऑटोमेटिक रिपेयरिंग में जाता है, तो ऑल प्रोसेस को क्योर करके हेल्दीएस्ट प्रोसेस में जाते हैं। तो यहाँ पे जब हम फाइबर को फर्मेंट करते हैं, उसमें फ्रूट भी आ गया, वेजिटेबल भी आ गया, और कार्ब्स भी आ गया, तो वहां पे रिपेयरिंग गट होता है, इंफ्लेमेशन रिड्यूस होता है, मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होता है, आपकी इम्यूनिटी को सपोर्ट मिलता है, और उसका ऑटोमेटिक रिफ्लेक्शन आपके टाइप 2 डायबिटीज, ओबेसिटी, ऑटोइम्यून डिजीज एंड इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में आता है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके शुगर लेवल और वेट लॉस पे भी काम करता है जब हम फाइबर फर्मेंटेशन लेते हैं। नाउ अंडरस्टैंडिंग अबाउट द सीड फर्मेंटेशन इज एडवांस। ठीक है, सीड तो अपने आप तो नहीं लेना, कभी नहीं लेना, बिकॉज सीड इज नॉट सिंगल सीड, इज ह्यूज प्लांट। ओके, अगर हम लेते हैं तो वी हैव टू नो कि हम क्यों ले रहे हैं, हमारे बॉडी के कौन से हॉर्मोन्स के ऊपर काम करेगा, और किस तरह से उसका इफेक्ट आएगा। सो तो बेटर है कि आप अपने एक्सपर्ट से एडवाइस लें। आपको जहाँ पे जरूरत है सीड खाने की, पूछ के खाएं। ठीक है। सीड कंटेन प्रीबायोटिक फाइबर, is also contain polyphenol, resistant starch,
which feeds the beneficiary bacteria. What is the resistant starch? Resistant starch बोले तो दिखता नहीं है, लेकिन जब भिगोएंगे तो ऑटोमेटिक स्टार्च फॉर्मेशन होता है। फ्लेक्सीड, सिया सीड, पंपकिन सबको भिगोने के बाद एक्टिवेशन स्टार्च होता है। और जो हमारे बॉडी में हम जाते हैं तो उसको कितना चाहे चबाने की कोशिश करें, लेकिन 50% वी आर नॉट चूवेबल एंड 50% आर नॉट एब्सॉर्बेबल द इंसल्ट इन योर स्टमक। एंड वो लाइनिंग करता है, इधर से उधर जाता है। ठीक, अगर हम सीड को हिलाते हैं पानी में, सिया सीड डालो और हिलाओ, तो जो बल्जिंग मूव होता है, तो सिमिलर बल्जिंग आर मूव इन योर स्टमक। हमारे स्टमक का जो साइज है ऐसे गॉल सेट से ऊपर है, तो वहां पे लिफ्टिंग होता है। और जहाँ पे लिफ्टिंग कंटेंट्स रहता है, ये रजिस्ट हो जाता है, वो एब्सॉर्ब नहीं होता, वो फाइबर के दौरान निकलता है। तो जब भी हम सीड को फर्मेंट करते हैं, तो इस क्रिएटिंग गुड बैक्टीरिया, इस क्रिएटिंग द लैक्टोबैसिलाई एज सिमिलर एज द एनिमल, बट यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट बेसिलाई बनता है। बिकॉज तो प्रोटीन में सिर्फ दालें या पल्सेस नहीं थे, प्रोटीन में नट्स भी रहते हैं, और सिमिलरली प्रोटीन सीड में भी रहता है, सीड कंटेन ऑल्सो प्रोटीन। तो यहाँ पे सीड और प्रोटीन, मतलब जो पल्सीज और ड्राई फ्रूट का प्रोटीन है वो, और सीड का प्रोटीन, दोनों में एक ही डिफरेंट है, रेजिस्टेंट स्टार्च का। ठीक है, तो सीड का प्रोटीन है वो हेल्दीएस्ट प्रोटीन व्हेन वी आर फर्मेंटेड। बट इन केस ऑफ द प्रोटीन नट्स एंड पल्सीज, उसका फर्मेंटेशन है, आपको संभाल के खाना, भिगो के खाना है, सारे सीड्स को भिगो के ही खाने हैं, सारे नट्स को भिगो के ही खाने हैं। भिगो के खाते हैं तो उसका ऊपर का जो एंटी न्यूट्रिएंट लेयर है वो टूटता है, और बॉडी इजीली उसको डाइजेस्ट करने के लिए तैयार होता है। सेकंड थिंग कि जब भी वो डाइजेशन में जाता है तो वो इजी टू एब्सॉर्प्शन में रहता है। हम ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, महंगे लेके खाते हैं, लेकिन अगर हम ऐसे ही खा लेते हैं तो उसका एब्सॉर्प्शन प्रॉपर नहीं होता। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू टॉक बिफोर ईटिंग। द एग्जाम्पल के रूप में चार सीड है, वो सबसे ज्यादा यूज होते हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ द फर्मेंटेशन: फ्लेक्सी, सिया सीड, पंपकिन सीड एंड सिसमी सीड। उसके अलावा जो स्पाइसेस वाले सीड है, सौंफ है, अजवाइन है, जीरा है, मेथी है, लौंग को यूज करते हैं कई बार। तो ये सारे, उसके अलावा सुआ दाना बोलते हैं, आई डोंट नो दिस एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द हिंदी एंड इंग्लिश। सुआ दाना जो बोलते हैं वो प्रेगनेंसी के दौरान खाए जाते हैं। तो ऐसे स्पाइसी सीड है, और स्पेसिफिक वात पित्त कफ के प्रकृति के हिसाब से दिया जाता है। ठीक है, उसका फर्मेंटेशन ही बहुत ही हेल्दी माना जाता है। वो द्राक्षासव में भी हम मिक्स ऑफ फ्रूट सीड करके द्राक्षासव बनाते हैं। तो दो चीज कर सकते हैं, अब फ्रूट के साथ सीड को मिक्स करके एक कंबाइंड रेजिस्टेंट स्टार्च विद द kombucha बना सकते हैं। Is also benefit to your guts and balance your hormones. But please take the advice from your expert कि आप कौन सा सीड और कौन सा फ्रूट मिक्स करें। सेकंड थिंग कि जब भी हम सीड ऐसे ही खाते हैं कच्चा, तो उसका डाइजेशन पावर लॉन्ग हो जाता है। अगर हम उसको भिगो के खाते हैं तो खाने की क्वांटिटी कम होती है, लेकिन उसका डाइजेशन पावर शॉर्ट हो जाता है, और फटाफट डाइजेस्ट होता है और आपकी बॉडी को सब टोटली डाइजेशन में हेल्प करता है। बेनिफिट क्या है, तो क्या है, हार्मोन को बैलेंस करते हैं। बहुत सारे पेशेंट को मैं ऑलरेडी सीड एडवाइस करती हूँ कि आपको प्रॉपरली फॉलो करना है। द सेकेंड थिंग इज सपोर्ट द डिटॉक्स पाथवे, तो स्किन को क्लीन करता है, हेयर को क्लीन करता है, नेचुरल अपनी जो क्लींजिंग प्रोसेस है उसको सपोर्ट करता है। विच टाइप ऑफ द डिजीज सीड हेल्प्स इन पीसीओडी में सबसे बेटर तरीका है सीड थेरापी लेके हम पीसीओडी को क्योर कर सके। इवन थायराइड, थायराइड में भी दो तीन सीड ऐसे हैं कि जो हेल्प कर सकते हैं। मेटाबॉलिक सिंड्रोम कोई भी है वहां पे हम यूज कर सकते हैं। Now the last slide regarding the advanced gut microbiome is the flower in plant fermentation. तो फ्लावर ने फ्लावर के अंदर फ्लेवेनोइड नाम का एक कॉम्बिनेशन रहता है फ्रूट और प्लांट का। फ्लावर इज द मिडल ऑफ फ्रूट एंड प्लांट। ठीक है, न तो वो फ्रूट है न तो वो प्लांट है, वो फ्रूट और प्लांट के मिडल पोर्शन है। उसके पीछे सीड बनता है या तो उसके पीछे फ्रूट बनते हैं। तो उसका यूज हमें अकॉर्डिंग टू अपनी डिजीज के हिसाब से लेना। बहुत ही हेल्पफुल है फ्लावर, अगर हम उसको प्रॉपर तरीके से लेते हैं तो। लिवर डिजीज में, लिवर फैटी लिवर को चेंज करने के लिए, इवन सिरोसिस ऑफ लिवर में काम करता है, कार्डियक डिजीज में काम करता है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम में काम करता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में काम करता है,
यूट्राइन फाइब्रोइड में काम करता है, एंटी इन्फ्लामेशन प्रोसेस में बहुत सारे फायदे हैं। ठीक है। तो कौन कौन से फ्लावर है वो ज्यादातर यूज होते हैं? रोज हम सबको पता है वो ठंडी तासीर का है, लेकिन रोज का सबसे ज्यादा बेनिफिट लीवर पे है। अगर हम रोज रोज का फर्मेंटेशन यूज करें तो हमारा लीवर बहुत ही हेल्दी रहता है। लेकिन फ्लावर फर्मेंटेशन वी हैव टू डू इट वेरी केयरफुली, बिकॉज फ्लावर में बहुत ही जल्दी फंगस आता है, बहुत ही जल्दी फंगस आ जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा हीट ड्राई प्रोसेस करके उसका फर्मेंटेशन लिया जाता है। और दूसरा फ्लावर का फर्मेंटेशन है कोल्ड वेदर में लिया जाता है, हीट में नहीं। कैमोमिला, कैमोमिला is also very good for joint disease, rheumatoid arthritis, joint related issue, osteoarthritis, pouring of your stone, so many issue with your joint. तो वहाँ पे कैमोमिला इज वेरी वर्क वंडरफुल। हिबिस्कस फ्लावर, हिबिस्कस फ्लावर हेयर के लिए बहुत ही अच्छा है। ब्लीडिंग ज्यादा है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग ज्यादा है तो हिबिस्कस फ्लावर यूज करते हैं। आपके यूट्रस में फाइब्रोड है तो वहां पे हिबिस्कस फ्लावर यूज होता है। मूड को अच्छा करने के लिए हिबिस्कस फ्लावर यूज होते हैं, तो इट्स ऑल्सो गुड। क्लो फ्लावर, लौंग के फ्लावर यूज होते हैं। वो स्पेसिफिकली जहाँ पे आपके न्यूरो सिस्टम डीएक्टिवेटेड है तो वहाँ पे यूज होते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे फ्लावर है जिसका हम यूज करते हैं। मैरीगोल्ड का यूज करते हैं, वो भी बहुत ही हेल्पफुल है। रोजमेरी में जो फ्लावर आते हैं उसका यूज भी होता है, वो भी बहुत ही हेल्पफुल है। लेकिन फ्लावर फर्मेंटेशन इज मच डिफिकल्ट टू अदर। फ्लावर फर्मेंटेशन करना इस बहुत ही डिफिकल्ट है। फ्लावर की बहुत सारी फूड रेसिपी बनती है। रोज का आपको सबको पता होगा, वी आर यूजिंग एट द फॉर्म ऑफ द रोज एंड मिसली इन द फॉर्म ऑफ द ग्लूकोज। ठीक है। तो जैसे हम उसको जेल की तरफ फॉर्म करते हैं, बहुत ही ठंडा है, गुलकंद बोलते हैं, तो उसका हम यूज करते हैं। वैसे ही जासवद मतलब हिबिस्कस फ्लावर का भी बहुत ही अच्छा गुलकंद बनता है। कैमोमिला उसका एक पेस्ट बनता है जो अचार की तरह खाया जाता है। तो फ्लावर की बहुत सारी रेमेडी भी है, बहुत सारी रेसिपी भी है, वी आर यूजिंग इन अवर डेली रूटीन लाइफ ऑल्सो। इसके अलावा जो तुलसी है उसके पत्ते, उसके फ्लावर भी बहुत ही अच्छी तरह से यूज होते हैं फॉर एंटी इन्फ्लामेशन एंड इंक्रीज द इम्यून सिस्टम स्पेसिफिक इन द पीडियाट्रिक एज ग्रुप। मरेठी करके एक फ्लावर आता है, आई डोंट नो अबाउट द इंग्लिश नेम और इवन हिंदी नेम, बट मरेठी से गुजराती में। तो मरेठी के जो फ्लावर है वो अस्थमा के लिए यूज होता है। इट्स वेरी इफेक्टिव इन अस्थमेटिक पेशेंट। हमारे जो मैंगो के ट्री के ऊपर छोटे छोटे फ्लावर्स आते हैं वो यूज होते हैं स्किन डिजीज के लिए। वो फ्लावर को लेके अगर हम पेस्ट बना के स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं, इट्स वेरी इफेक्टिव इन स्किन ऑल्सो। ठीक है। नीम के पत्ते, नीम का जो फ्लावर है वो यूज होता है हेमरोइड्स और पाइल्स के लिए। एक्सटर्नल भी लगा सकते हैं, पी भी सकते हैं। तो बहुत सारी प्लांट है जिसके फ्लावर फर्मेंटेशन बहुत ही हेल्पफुल है, not only to repair your gut but is also effective in specific hormonal imbalance in your body. लेकिन flower fermentation is very difficult to maintain in fermented form because it's creating so fungus fastly rather than the bacterial growth. बैक्टीरिया आता है उससे पहले ही उसके फंगस ग्रोथ हो जाते हैं। ठीक है। So that's why we are not choosing flower, seed and protein fermentation in our diet. Now the understanding about the क्लोजिंग डाइट। तो क्लोजिंग में क्या ध्यान रखना है? एटलीस्ट फॉर 20 डेज डू नॉट यूज द आउटर साइड फूड। अगर आप बाहर का खाना खाते हो तो गर्म तीखा खाना नहीं खाना। कभी भी ठंडा कुछ भी नहीं लेना। ठीक है। नॉट इन फॉर्म ऑफ द जूस, नॉट इन फॉर्म ऑफ द वाटर। सीधा ठंडा नहीं लेना, थोड़ा रूम टेम्परेचर पे आके खाना है। रिगार्डिंग द 5 ड्रिंक ऑफ अवर प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक डी, कांजी आप वीकली एक बार ले सकते हो अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, अकॉर्डिंग टू योर अवेलेबिलिटी, अकॉर्डिंग टू योर वेजिटेबल। हीट में फर्मेंटेशन फास्ट आता है, तो जब भी फर्मेंटेड बनाए तो रात को बनाए, दिन में मत बनाए, क्योंकि रात को थोड़ा ठंडा टेम्परेचर रहता है तो मॉर्निंग में आपको इजीएस्ट मिलता है। रिगार्डिंग कार्ब फर्मेंटेशन, अगर हम राइस का यूज कर रहे हैं, फर्मेंटेड राइस वाटर यूज कर रहे हैं, तो वीकली 2 to 3 डेज 50-50 ml एज अ एडप्शन डोज लेना है। यहाँ पे हमने बूस्टिंग किया था तो 200 ml 100 ml ले रहे थे, लेकिन अभी आपको लगता है कि कंटिन्यू करना है तो उसके हिसाब से ले, अदरवाइज आपके डिजीज के हिसाब से ही आपको फूड लेना है। ठीक है। गट रीसेट, this is the system to setting your body, is not a diet to repairing your hormone, is a system to setting your body। एंड उसके बाद आपको नॉर्मल फूड को धीरे धीरे फर्मेंटेड फूड में लेके जाना है। रिगार्डिंग द
कंबूचा, किमची एंड सौरकोट। अगर आपके पास अभी भी अचार है तो आप 1 स्पून डेली यूज कर सकते हो। बाद में वापस बना भी सकते हो, लेकिन लुक फॉरवर्ड योर टेम्परेचर। अगर हीट ज्यादा है तो सौरकोट इतना टेस्टी नहीं बनेगा और वो जल्दी खराब होने के चांसेस है। तो प्लीज मेक की जब तक ठंडा एटमोसफेयर ना हो तो तब तक हम सौरकोट का यूज नहीं कर सकते। किमची बनाई हुई है सबके पास तो फ्रीज में रख लो, आप उसका यूज कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ द पेस्ट, इन फॉर्म ऑफ द पराठा, इन फॉर्म ऑफ द रोल ऑल्सो आप यूज कर सकते हो। कंबुचा आप सबके पास पड़ा है। आपको हर रोज 2-2 स्पून कंबुचा एटलीस्ट फॉर 7 to 8 डेज लेना है। कंबुचा का जो इफेक्ट है वो आपको 7 to 8 डेज लेने के बाद एग्जैक्ट पता चलेगा। क्या इफेक्ट आएगा, आप ऐसे ही मूड में आ जाओगे। ठीक है, कोई भी बिना वजह आपका मूड अच्छा होना स्टार्ट हो जाएगा, तो कंबुचा इज वेरी इफेक्टिव फॉर दैट। रिगार्डिंग द द्राक्षा सव, तो अभी जितना बना है उतना कंप्लीट करना है। दोबारा जो बनाना हो आपको तो 15 दिन के बाद बनाना है। बिकॉज द्राक्षा सव एक ऐसा है कि जो आपके डायरेक्ट न्यूरॉन डोपामाइन सेरोटोनिन पे काम करता है, स्लीप हार्मोन को इंक्रीज करता है, डीप स्लीप में आपको लेके जाता है। तो कई बार लोग उसको हैबिचुअली यूज करते हैं, उसको जब द्राक्षा सव पीते तभी जाके नींद आता है। तो इतना हैबिचुअली नहीं करना। वैसे उसमें कोई हैबिचुअल सब्सटेंस नहीं है, हमने घर पे ही बनाया और मेरी वाली जो रेसिपी है तो बहुत ही न्यूट्रिएंट एंड आयुर्वेदिक बेस है। आयुर्वेद में से भी हमने बहुत 2-3 चीजें जो नहीं हमें चाहिए वो निकाल के बनाया है। तो हैबिट नहीं करेगा, लेकिन कहीं आपका उसका इतना डिजायर ना हो जाए कि आपको हर रोज वो पीने का जी करे। द्राक्षा सब हीट के सामने प्रोटेक्ट करता है, स्किन को इंप्रूव करता है, इंटेस्टाइनल लाइनिंग को इफेक्ट करता है, आपके ब्रेन को अच्छा रखता है, हाइपरटेंशन को रिड्यूस करता है। अगर बर्निंग सोल है तो उसको रिड्यूस करेगा, आपके नर्व एंडिंग पे इश्यू है तो उसको रिड्यूस करेगा, आपकी ब्रेन को एक्टिवेट करेगा, बच्चों में मेमोरी बूस्टर करने में हेल्प करेगा। देयर इज अ लॉट्स ऑफ बेनिफिट ऑफ द्राक्षा सब, बट डू नॉट कंज्यूम रेगुलरली एवरी डे एवरी डे। You have to stop for 10 to 15 days and then after you have to prepare again. But look forward for atmosphere. ठीक है, अगर गर्म है तो रात को भिगोना है, सुबह आपका द्राक्षा सूप बन जाएगा। कहीं पे भी आपको लगता है कि आपका फर्मेंटेशन गलत हो रहा है तो प्लीज टेक अ हेल्प फ्रॉम एडवाइस। डू नॉट ड्रिंक विदाउट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, कहीं दिखता नहीं है लेकिन बहुत गंदा फंगस है। ब्लैक फंगस इज वेरी डेंजरस, येलो फंगस इज वेरी गुड। लेकिन येलो कब आता है, जब आपका फर्मेंटेशन एकदम बेस्ट होता है उसके बाद येलो आता है। ब्लैक कब आता है, विदाउट फर्मेंटेशन ब्लैक आ जाता है। तो ब्लैक आता है तो ऊपर से निकाल के नीचे का खाए, वो गलती भी कभी नहीं करना, उसके बाद कभी यूज नहीं करना। जब भी बनाते हो तो ग्लास जार ही यूज करना है। ग्लास कंटेनर इज वेरी सफेस्ट फॉर एंटीबैक्टीरियल इफेक्टिव। ठीक है, स्टील में अगर हम किसी से भी साफ करते हैं, चाहे सोप यूज करे चाहे लिक्विड यूज करे, कोई भी बर्तन से हम मतलब उसको साफ करते हैं तो छोटे छोटे माइक्रोब्स रहते ही है, वो डिस्टरिलाइज नहीं होता कभी। लेकिन ग्लास को एक कैपेसिटी है कि अगर उसको हम वॉश करते हैं तो उसका आउटर लेयर निकल जाता है, तो इंटरनल बैक्टीरियोजेनिक इफेक्ट है वो रिड्यूस रहता है। तो आपको जब भी बनाना है तो ग्लास जार यूज करें, नैरो कंटेनर यूज करें, उसका माउथ नैरो हो उसका यूज करें। बड़ा वाला तपेला वगैरह यूज मत करो क्योंकि वहां पे नहीं आएगा फर्मेंटेशन, वो बगड़ ही जाएगा, खराब ही हो जाएगा। बिकॉज स्टील में एटमोसफेयर का इफेक्ट बहुत ही फास्ट आता है रादर देन द ग्लास। तो आपको ग्लास जार में जो उसका नैरो ओपनर है उसी के अंदर बनाना है। यू कैन स्टोर फर्मेंटेशन इन फ्रीज एटलीस्ट फॉर 1 वीक। उससे ज्यादा स्टोर मत करना क्योंकि 1 वीक में वो बैक्टीरिया खुद मर जाता है। अगर हम ठंडा करते हैं तो वो बैक्टीरिया जिंदा नहीं रहते, 1 वीक तक जितने थे उतने रहेंगे। तो आप जब बाहर निकालो तो रूम टेम्परेचर पर आने दो, उसके बाद पीना स्टार्ट करना है। ठीक है, तो दिस इज द क्लोजिंग एडवाइस फॉर टेकिंग द नेक्स्ट डे डाइट। कल का डाइट बहुत ही हल्का लेना है। कल एक दिन हो पाए तो लो फर्मेंटेशन यूज कर सकते हो। सुबह का बनाया हुआ चावल अब दोपहर को, दोपहर का बनाया हुआ रात को, ऐसा ले सकते हैं। ठीक है, चलो नाउ द अंडरस्टैंडिंग अबाउट द मिलेट। हमने एक मिलेट पूरा 7 डेज खाया। ठीक है, राइस के इधर उधर घूमते रहे और राइस को ही खाया। आज हमने ज्वार बाजरे रागी को ऐड किया। तो हर डे आपको कोई एक मिलेट ऐड कर सकते हो। मिलेट को फर्मेंटेट करके भी खा सकते हो, जैसे हमने राइस के वाटर में कढ़ी या तो खिचड़ी बनाया या तो राइस का यूज करके ज्वार और बाजरे की रोटी बनाई, वैसे हम फर्मेंटेशन को यूज कर सकते हैं। दूसरा चीज है रेस्ट ओवर फूड खाना है। रात का बना हुआ राइस है, आपको कल खाना है, लेकिन उसको दोबारा गर्म नहीं करना। हम खाते हैं रेस्ट ओवर फूड, लेकिन गलती क्या करते हैं, ओवन में जाके गर्म करते हैं या तो पानी में रख के गर्म करते हैं, उसको वापस गर्म करते हैं तो उसका बैक्टीरिया मर जाता है।
तो हफ्ते में 2 या 3 दिन पड़ा हुआ खाना खाना है, चाहे बाजरी खाए, चाहे ज्वार खाए, चाहे राइस यूज करें। 1 से 2 बार आपको कांजी लेना है। If you continue with the draksas of 1 week, you have to stop 1 to 2 weeks, and then after you can prepare again. Regarding fermented rice water, you have to consume the 15 to 100 ml weekly 3 to 4 times. Okay, do not use the more. Regarding the sauerkraut and kimchi, you have to use the 1 spoon in your daily routine life. But अगर heat ज़्यादा है तो stop. Cold है तो you can prepare against to balance your taste bud and according to that. रिगार्डिंग द माउथ क्लींजिंग, नीम इज वेरी गुड। यहाँ पे मैंने आउटर केमिकल इसलिए स्टॉप कराया था क्योंकि माउथ का बैक्टीरिया ही नीचे सिग्नल देता है बैक्टीरियोलॉजिकल इफेक्ट को बनाने के लिए। अगर हम माउथ में ही गंदगी भर के रखेंगे, माउथ में ही केमिकल पेस्टिंग करेंगे, तो नीचे बैक्टीरिया का भी बनता ही नहीं। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू यू, अगर आपको पेस्ट करना है तो आप पेस्ट यूज कर सकते हो। आपको लगता है नीम इज वेरी गुड फॉर यू, यू कैन यूज द नीम ऑल्सो। रिगार्डिंग द बाथ, एटलीस्ट फॉर चैत्र मास, मतलब अभी से स्टार्ट होगा तो 5 to 10 डेज के बाद, तो वहां पे नीम का बहुत ही इफेक्टिव है, तो यू कैन यूज इन योर बाथ वाटर। ठीक है, नीम के पानी से नहाना स्टार्ट करो, क्योंकि फंगस ग्रोथ बढ़ने के चांसेस बढ़ेंगे। अगर हम नीम वाटर यूज करेंगे तो हमारा स्किन हेल्थी रहेगा। आई होप कि आप सबके स्किन पे एक ब्राइटनेस आया हो, एक पूरा हल्का सा इफेक्ट आया हो, जो आपके बॉडी को सबसे ज्यादा बेनिफिट देता हो। ठीक है, तो ये पूरा क्लोजिंग का एडवाइस था कि आपको कल से क्या खाना है, किस लिए और क्यों फॉलो करना है। जो लोग का आज 3, 4 या 5 डेज चल रहा है, कंटिन्यू करें अप टू 7, और उसके बाद आप इसी प्रोसेस से जा सकते हैं। चलो, नाउ द अंडरस्टैंडिंग अबाउट द मेंटल थॉट। ठीक है, यू हैव टू ग्रेटिट्यूड टू एवरीवन, you have to thankful to everyone in the healing system for each other. I am also gratitude to everyone. I am thankful to all of you for joining this workshop and learning from me. ठीक है, सबको टाइम देना वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने हर रोज आपका आधा घंटा 1 घंटा निकाला फॉर लर्निंग सिस्टम, इज ऑल्सो थैंकफुल फॉर मी ऑल्सो। ठीक है, एंड वेन वी गाइड समवन, वेन वी इंस्पायर समवन, इज नॉट इनफ टू अवर सेल्फ, बट वी हैव टू लिफ्ट अदर ऑल्सो। सो यहाँ पे वर्कशॉप के दौरान मैं आप सबको एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपके आसपास कहीं पे भी आपको कोई बीमार इंसान दिखता है, चाहे उसका हेल्थ अच्छा नहीं है, चाहे उसका मेंटल अच्छा नहीं है, चाहे उसको ऑटो इम्यून डिसीज है, चाहे उसको कैंसर है, चाहे उसको कोई भी बीमारी है, तो प्लीज मेरी तरफ से लेट देम शेयर माय प्रोफाइल, माय नंबर टू देम। I have a capacity. We can build her energy level and also come out from the healthiest way. एक मोटो इसीलिए आपके साथ शेयर करना जरूरी है क्योंकि यहाँ पे जो लोग बीमार है वो बहुत ही तकलीफ में रहते हैं, पूरी दुनिया घूमते हैं, लेकिन उसका राइट सोर्स, राइट जो आउटकम है वो नहीं मिलता, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस रिगार्डिंग टू ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन साइंस पता ही नहीं है, इसीलिए उधर उधर घूमते रहते हैं। तो प्लीज सर, आपको जहां पे भी कोई भी दिखता है तो आप प्लीज शेयर करना। वी हैव ए 1 वीक चांस। ठीक है, मेरे पास अभी भी 1 वीक है। एक गट टू सेट वर्कशॉप के दौरान जो हमने एक मोटो चलाया था जीवन जागृति सेवा ट्रस्ट के द्वारा, कि हम हेल्दीएस्ट इंडिया बनाएंगे, मेक ईच वन टीच वन का जो हमारा प्रोटोकॉल है, आपको क्यों इतना डीपली पढ़ाया गया, क्योंकि मैं आपको हेल्दी बनाऊंगी, आपको पढ़ाऊंगी तो आप किसी और को बता सको और उसकी लाइफ हम हेल्दी कर सके। तो उस मोटो को सबसे बेस्ट तरीका है कि हम सोशली उसको प्रमोट करें। वैसे मैं स्पेसिफिक सोशल मीडिया पे इतना बिलोंग करती हूँ, एक डॉक्टर को अपना सेल्फ मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर डॉक्टर खुद नहीं करेगा तो नहीं करने वाले लोग गंदी तरह से सिस्टम खराब करते हैं। हम देखते हैं कि बहुत बार लोग बहुत कुछ करने के बाद गलत होते हैं, अर्लियर वो अच्छे ही होते हैं। तो वी हैव टू अवर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक अ सोसाइटी हेल्दी एंड मेक अवेयरनेस। आपको जहां पे भी लगता है आप बोलना स्टार्ट करो कि आप ये करो वो करो, क्योंकि आप जितना अवेयर लोगों को करोगे उतना लोगों के साथ आपका पॉजिटिव कनेक्शन बनेगा। लेकिन फर्स्ट रूल से कि हम हेल्दी रहें, सेकंड रूल से कि हमारे फैमिली मेंबर को हम अवेयर करें। कई बार ऐसा होता है कि घर का एक इंसान डाइट फॉलो करता है, दूसरे 2 इंसान बीमार है, दवाएं खाते ही रहते हैं, तो ऑन दैट टाइम वी आर फेल। Because if we know कि this is the wrong phenomena, we have to treat them, we have to teach them, we have to support them to come out from the healthiest system। ठीक है, तो ये मेरा मोटो है एंड आई होप कि आप सब लोग आराम से इस वर्कशॉप के दौरान जो भी लर्न किया है उसको आगे लेके जाएंगे।
आप मेरा प्रोफाइल शेयर कर सकते हो, आप मेरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शेयर कर सकते हो। वैसे मैं इतना सोशली एक्टिव नहीं हूँ, लेकिन फिर भी बहुत कुछ चीजें रखा है जिससे लोगों को पता चले कि यस, दिस इज द वे वी आर ट्रीटिंग द पीपल एंड देयर आर द सम सक्सेस स्टोरी। उसके बाद उसको पता चले कि यहाँ पे रिपेयर कर सकते हैं। One more important thing regarding autoimmune disease. Autoimmune is not a just disease. Autoimmune is a very hugest burden, financial, mental and physical on the whole family. अगर घर में किसी एक को autoimmune है तो पूरा फैमिली डिस्टर्ब रहता है। And the autoimmune disease में there is a no medication available in allopathic science. There is a no specific pathophysiology we can treat with the medication. Okay, so we have a chance, we have a capacity to repair with the immune boosting in our gut. ये पूरा सिस्टम इसीलिए समझा कि कितने सारे ऑटोइम्यून है, टोटल 184 है। तो 184 ऑटोइम्यून डिजीज में से एटलीस्ट 180 डिजीज ऐसे है कि वी कैन क्योर, वी कैन रिवर्स, वी कैन रिपेयर, बट वी हैव टू रीच फॉर दैट। ठीक है, सो आप सबको ये मेरा एक मोटो है जो शेयर किया, नाउ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू शेयर। जहां पे भी आपको पेशेंट दिखता है 1 वीक तक आई हैव ए चांस टू गिव द बिगेस्ट डिस्काउंट ऑन अवर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। वी हैव ए 3 मंथ, 6 मंथ एंड 1 ईयर मेंबरशिप प्रोग्राम। एक्चुअल जो मेंबरशिप हमारा जो पेमेंट आता है कोई अलग मोटो से यूज होता है, वी आर टीचिंग द ऑर्फन गर्ल एजुकेशन, तो पूरा फंड वहीं पे जाता है। लेकिन इस मुकाम पे जो भी हमें फंडिंग मिलेगा, आपका वर्कशॉप से जो भी फंड आया है, या तो इस 1 वीक तक जितने भी रजिस्ट्रेशन न्यू पेशेंट के होंगे, वो पूरा फंड जो है वो अलग जगह पे जाएगा। और वहां पे एक पूरा हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक रिसर्च स्टार्ट हो रहा है कि हम कैसे हेल्थीएस्ट सोसाइटी को बना सके। इट्स नॉट ओनली इन इंडिया, वी आर वर्किंग इन द वर्ल्ड वाइड। मेरे पास 32 कंट्री के पेशेंट है एंड वी हैव ए चांस टू ट्रीट ईच एंड एवरी पेशेंट इन द डिस्टेंस। ठीक है, दुनिया के कोई भी कोने से है तो आई नो कि ईच एंड एवरी कंट्री में क्या फूड मिलता है, क्या प्रोसेस है, क्या उसकी मेथोडोलॉजी है, उसका माइंड सेटअप कैसा है और किस तरह से हम उसको क्योर कर सकते हैं। तो दिस इज द ट्रूली मोटिवेशन फॉर ऑल ऑफ यू कि अगर आपको कहीं पे दिखता है तो 1 वीक है। 1 वीक के बाद हमारे जो रेगुलर चांस कोर्सेज की जो भी फीस है उसके ऊपर हम थोड़ा बहुत डिस्काउंट देके दे सकते हैं, लेकिन दिस वीक्स वी आर गिविंग द ह्यूज बिगेस्ट डिस्काउंट स्पेसिफिक इन ऑटोइम्यून डिजीज। ठीक है, तो आप वहां पे शेयर करना। एंड रिगार्डिंग द फाइनेंस, फाइनेंस इज नॉट अ मेजर इश्यू। हम जो भी पेमेंट लेते हैं, चलो मैं थोड़ा डीपली आपको दिखाती हूँ कि हम जो भी पेमेंट लेते हैं वो पेमेंट एक्चुअली इज नॉट योर खर्चा हो रहा है हेल्थ के ऊपर, वो नहीं। यू आर इन्वेस्टिंग इन योर हेल्थ एंड व्हाट इज द आउटकम फॉर दैट? यू हैव ए बिगेस्ट फाइनेंशियल सपोर्ट, यू हैव ए हेल्थीएस्ट लाइफ, बोथ टुगेदर। चलो थोड़ा समझ लेते हैं। अगर कोई इंसान बीमार है और 3 मंथ्स में उसका ब्लड रिपोर्ट्स होते हैं, उसका मेडिकल इन्वेस्टिगेशन होते हैं और वो डॉक्टरी तपास के पास जाते हैं और उसका मेडिकेशन चलता है, तो सिंगल हार्मोनल डिजीज टेक्स से 10 to 15,000 रुपीज पर 3 मंथ्स। ठीक है, सिंगल हार्मोनल डिजीज। अगर कोई ज्यादा पिल्स लेते हैं, ज्यादा मॉलिक्यूल्स चलते हैं, तो उसके और ज्यादा रिपोर्ट्स होते हैं, और ज्यादा सीटी स्कैन होते हैं, एमआरआई होते हैं, और उसके जो भी पेमेंट है यूजेस्ट इन्वेस्टमेंट है, मतलब यूजेस्ट खर्चा हो रहा है उसके ऊपर। उसके बाद पता तो यही चलता है कि इंसान को ये प्रॉब्लम है, फिर भी 3 महीने के बाद वो रिपेयर नहीं, और अगले 3 महीने में उससे भी ज्यादा, उसमें 500 हजार प्लस होके आगे जाता है। और ऐसा 2 साल, 3 साल, 4 साल के बाद देखते हो तो इंसान जहाँ थे वहां से वर्स्ट कंडीशन में जाने के बाद थाउजेंड ऑफ रुपया उसका चले जाते हैं, दे आर नॉट गेटिंग बैक देयर मनी। बट इन केस ऑफ वी आर इन्वेस्टिंग इन योर हेल्थीएस्ट सिस्टम टू रिवर्स योर डिजीज, तो आप एक बार जो इन्वेस्टमेंट करते हो उसके बदले में आपको लाइफ में बहुत सारे पैसे में आपको बेनिफिट मिलता है। एक तो सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि आपका आउटर कॉस्ट रिड्यूस हो जाता है। अगर आप हेल्दी फूड खाते हो तो बाहर का आना जाने में जो भी खाना पीना बाहर से परचेस करते सीधा कट डाउन हो जाता है। सबसे बेटर चीज है कि हेल्दीएस्ट फूड आर ऑलवेज नियर टू यू एंड यू आर नॉट बाइंग दैट मच प्रोडक्शन लेवल। ठीक है, अगर हम बेकरी आइटम खाते हैं तो आप इधर उधर से बिस्किट लाए, पैकेट लाए, वो लाए, पूरा घर भर के रखे हो। लेकिन जैसे ही आप डाइटिंग फूड पे जाते हो तो पूरे मंथ का 1,000 to 100 500 जितना रुपीस आप ऐसे ही सेव कर लोगे।
सेकंड थिंग कि आपके जो भी एक्यूट इन्फेक्शन है उसमें आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट है। आज तक के मेरे किसी भी पेशेंट को कभी भी मुझे नहीं लगा कि हॉस्पिटलाइज जाना पड़ा, उसको एडमिट करना पड़ा, उसको एक्यूट इन्फेक्शन लग गया, कुछ हो गया। बल्कि वो कुछ बाहर का खाता है और जो सिम्टम्स आते हैं वो डाइटिंग फूड से, तो कभी आपको वायरल एक्यूट हुआ ऐसा सिम्टम्स ही नहीं है। तो आपका जो एक्स्ट्रा हेल्थ खर्चा है वो बच जाता है। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, अब मंथली जो एक फिक्स अमाउंट आपके मेडिकल में जाता था, मेडिसिन में जाता था, इन्वेस्टिगेशन में जाता था, वो बच जाता है। मान लो कि आप 3 मंथ 6 मंथ मेंबरशिप लेते हो और उसके बाद 2 साल तक अगर आप हेल्दीएस्ट लाइफ जीते हो, तो आप जो भी इन्वेस्ट करते हो उससे लाखों गुना आपको बेनिफिट है, और सामने आपका हेल्थ आपको वापस मिल रहा है, आपकी फैमिली को आप एक सिक्योर हेल्थ दे सकते हो। और जब भी कोई फीमेल डेटिंग प्रोसेस में जाता है तो डेफिनेटली वन बोनस मिलता है, उसके घर का एक इंसान तो ऑटोमेटिक हेल्दी हो ही जाता है। तो फाइनेंस इज नॉट अ बिगेस्ट प्रॉब्लम। वैसे भी हमारा जो फाइनेंस है, कट डाउन द लेवल, पर डे का 110-120 के अराउंड हमारा कॉस्टिंग करता है। तो इट्स नॉट बिगेस्ट फॉर दैट, बट द मोटो इज वी हैव टू डू। ठीक है, और आप सबको नाउ आई गिव दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ द गट रिसेट वर्कशॉप, कि यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं तो वहां तक आपको जहाँ पे भी आपको लगता है, अगर आपको लगता है कि उसको मुझसे बात करने की जरूरत है तो मेरा नंबर सेंड कर दो। आपको लगता है कि यहाँ पे मेरी जरूरत है तो उसका नंबर मुझे सेंड कर दो। आई विल बी प्लान फॉर सेशन फॉर दैट, एंड वी आर कमिंग फ्रॉम दिस सिनेरियो कि जहाँ पे ऑटोइम्यून डिजीज है वहाँ पे हम कुछ हेल्प कर पाए। ओके, आई होप कि आप सबको ये सेशन बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा, मीनिंगफुल रहा होगा। तो प्लीज शेयर करना आपका फीडबैक जर्नी हमारे साथ, ताकि हम अपनी स्किन को शार्पन कर पाए। मुझे जहाँ पे अपडेट करना है रिगार्डिंग की क्या अपडेट आता है, अगर ऐसे गट रिसेट वर्कशॉप हम सबको कराए और सब प्लेटफॉर्म के लेके जाए, ऑनलाइन माध्यम पे लेके जाए, तो बॉडी को हम क्या बेनिफिट दे सकते हैं। तो प्लीज आपका फीडबैक शेयर करना। मैंने वोटिंग सिस्टम डाला है तो प्लीज वोट भी कर देना। एक और भी मैसेज है, मैं कभी गूगल मार्केटिंग नहीं करती, गूगल प्रोफाइल पे नहीं जाती, लेकिन टुडे मुझे एक टास्क मिला है कि पीपल आर मोर सर्चिंग यू ऑन गूगल। तो आज मैंने गूगल रिव्यू बनाया है, तो प्लीज आपका रिव्यू दे देना। आप वहाँ पे गूगल रिव्यू में स्टार देके आपका रिव्यू दे देना, आई विल शेयर इन द ग्रुप। ओके, चलो, सो आई होप यू एंजॉय दिस प्रोसेस एंड आई ट्राई माई बेस्ट टू कंप्लीट दिस होल गट रिसर्च वर्कशॉप विद द एडवांस लेवल। चलो, किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज। रोस्टेड सीड खा सकते हैं, चलो मैं पहले ग्रुप वाले क्वेश्चन ले लेती हूँ। फर्मेंटेड बीन्स एंड पल्सेस आर गुड, इज नॉट हार्मफुल, बट वी हैव टू यूज विथ द फाइबर्स। ठीक है, सलाद डाल के खाओ, लेमन डाल के खाओ, इट्स वेरी गुड फॉर दैट। रोस्टेड सीड खा सकते हैं, रोस्टेड करने के बाद उसका एंटी न्यूक्लियर लेवल चला जाता है, लेकिन इट्स नॉट हेल्प योर गट माइक्रोबायोम। अगर आपको गट माइक्रोबायोम के लिए आप सीड खा रहे हो तो यू हैव टू सॉक एंड देन आफ्टर यू हैव टू यूज। क्लोजिंग डाइट मैंने ऑलरेडी बोला है, मैं रिकॉर्डिंग नहीं शेयर करने वाली, लेकिन आई विल डू समथिंग फॉर दैट। सौरकोट एवरीडे ले सकते हैं, विद 2 to 3 days इज इनफ। किमची ले सकते हैं, इट्स ऑल्सो गुड। द्राक्षा सब कंटिन्यू करना है 4 to 1 week, एंड देन आफ्टर यू हैव टू स्टॉप, एंड देन आफ्टर यू हैव टू प्रिपेयर आफ्टर 1 week। रिकॉर्डिंग तो एक्चुअली आई नीड टू टेक अ परमिशन फ्रॉम द अपर लेवल। ठीक है, आई विल प्लान एंड देन आई विल से टू। ओके, चलो, रिगार्डिंग द क्वेश्चन आंसर, पहले मुझे 2-3 लोगों का फॉलोअप चाहिए। ठीक है, प्लीज मुझे बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा, यस यू एंजॉय दिस जर्नी और नॉट, एंड हाउ योर ऑरा फील। ठीक है, आपका बॉडी क्या कह रहा है आपको। चलो, आई म्यूट करती हूँ मैं सबको, तो नाउ यू कैन आस्क, यू अलाउड टू स्पीक। ओके, चलो, नाउ यू आर ओपन, यू कैन अलाउ टू स्पीक। चलो, सबसे पहला कौन आपका फीडबैक देगा, उसके बाद क्वेश्चन आंसर लेते हैं। ठीक है, आई एम अवेलेबल अप टू 11, so don't worry, I will complete all question and then we can leave. पहले वीडियो ऑन कर दे। दीपा रोज पिक्चर मांग रही है। ठीक है, चलो, आज आपका गट माइक्रोबायोम दिखा दो उनको। चलो, फास्टली ओपन करिए आपका फेस। पहले दिन से बहुत सारे लोगों का फेस आज आने लगा है ना, दैट मीन्स योर गट माइक्रोबायोम इज हेल्दीएस्ट कम आउट इन योर स्किन। रेडी, वीडियो ऑन कर दो। जो लोग अभी मुझे सुन रहे हैं प्लीज वीडियो ऑन कर दो यार। वेरी गुड। चलो, दिस इज द लास्ट फोटोग्राफ of our closing ceremony. Okay, good, check.
नाउ किसी और को कोई भी क्वेश्चन है तो पहले एक बार फीडबैक ले ले, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर पे जाएंगे। प्लीज अनम्यूट करें। चलो कौन स्टार्ट करेगा? चलो कृष्णा अनम्यूट कर दे। चलो So, यस। wonderful session. Thank you. No question today. नो क्वेश्चन, गुड। चलो दिस इज द बेस्ट कि आपको गट पूरा समझ में आ गया है ना। ठीक है, હિરલબેન, બોલો। કાલથી તમે જે રેગ્યુલરી કર્યું છે બતાવ્યું તું એ ફરીથી સ્ટાર્ટ કરવાનું કે હવે શું કરવું? તમારું બેઝલાઇન ડાયટ સ્ટાર્ટ કરી દેવાનું। ઓકે, શું કહો છો? તમને જે બેઝિક ડાયટ આપ્યું છે એ સ્ટાર્ટ કરવાનું, આની અંદર ખાલી ફર્મેન્ટેશન એડ કરવાનું। ઓકે ઓકે, એ શેર કરશો ફરીથી એક વખત? ના, શેર નહીં થાય। યુ હેવ ટુ રિપીટ ધીસ રેકોર્ડિંગ। ઓકે, આઈ વિલ શેર ઇન ગ્રુપ। હા ઓકે, આ રેકોર્ડિંગ એક વખત શેર કરજો પ્લીઝ. ઓકે, બોલો તૃપ્તિબેન, અનમ્યુટ કરું। નેહલબેન, actually સાચું કહું તો this was the easiest diet અને સૌથી વન્ડરફુલ। આજે ફર્સ્ટ ટાઈમ મને એવું ફીલ થયું કે બોધરેશન નથી લાગતું, ને તો મને બધું કલેક્ટ કરવામાં ને બધું કરવામાં બહુ ટાઈમ જતો રહે। આ તો આંખ બંધ કરીને 3 જાતના પાણી બનાવવા, 4 જાતના પાણી બનાવવા, ઇટ વોઝ સો ઇઝી ટુ કુક, ટુ ઈટ। અને મને તો બહુ બધો ડિફરન્સ આવ્યો આજે। તો મને ખબર નહીં, હું પાણીમાં બેઠા પછી તો હું એટલું બધું ઊંઘી ગઈ, અહીંયા સૂર્યમાં આવીને સૂઈ જ ગઈ, જાગી જ નથી। અને પછી જે ફ્લશ આઉટ થયું છે અને મ્યુકસ પણ સારું એવું નીકળ્યું, અને ગેસ નીકળ્યો તો કોઈ દિવસ બહુ બધું નીકળે, 500 ગ્રામ જેવું નીકળે બહુ બધું નીકળે। પાણીમાંથી। નીકળ્યા પછી 500, એટલે વેટ લોસ બહુ નહોતું દેખાતું પાણીમાંથી, પણ બહાર આવ્યા પછી ખબર નહીં બહુ બધો ગેસ, એટલે મને એમ લાગ્યું સ્ટૂલ છે, પણ ગેસ 500 ઉપર ગેસ નીકળ્યો છે। ગુડ। ચલો બોડી તમારું થોડુંક લાઇટ થઈ ગયું હશે। ગુડ। હા, લાઈટ તો નહીં, એકદમ લાઈટ થઈ ગયું છે, ઉડું એવું થાય છે, એમ કે ઉડું છું એટલું ફાઇન છે। અને અત્યારે પણ અમે ફરીવાર એકવાર જઈ આવી, તે પણ દેટ વોઝ અલ્ટ્રા ક્લીન। હવે આજે મારી પાસે ઈસબગુલ નથી તો ચાલશે? ભૂલી ગઈ। ઇઝ ઇટ ગુડ? ઇસબગુલ નહીં હોય આજે નહીં લેતા, ઇવન કોઈ ના લેતા, દ્રાક્ષા સૌ લઈ લેજો। ઇઝ વેરી ગુડ। અગર દ્રાક્ષા સૌ રેડી છે તો ઓકે, દેર ઇઝ નો નીડ ટુ એ ટેક। છે મારી પાસે, આજે હું ભૂલાઈ આવી છું। ગુડ। ઓકે। અને મને એક ક્વેશ્ચન છે, સોરી। હું છે ને નોર્મલી જ્યારે હાંડવો, ઢોકળા કંઈ પલાળું તો આપણે મિક્સ જ પલાળીએ ને, રાઈસ અને દાલ હું બેવ ઇક્વલ ક્વોન્ટિટીમાં લઉં છું, તો નોટ ગુડ। અને ફર્મેન્ટેશન સરખું આવું જ આવે પછી જો બનાવું તો એકદમ સોફ્ટ જ થાય છે, પણ ઇઝ ઇટ ગુડ ઓર બેડ? ઇઝ ઇટ ગુડ? ઇક્વલ ઇક્વલ જ લેવું જોઈએ, પણ બંનેને ભેગા ના પલાળવા જોઈએ। ઇટ્સ અ રોંગ વે। ઓકે, carbs always take a smaller time to ferment and protein takes a longer time to ferment. Okay, એટલે whenever you prepare any food which are the equal quantity of the carbs and protein, you have to soak in the different vessels and then you have to crush and then you have to mix. અચ્છા, ક્રશ કરીને મિક્સ કરી દેવાય કે એ પણ નહીં કરવાનું? એને મિક્સ કરાય તો એનું ફર્મેન્ટેશન પણ બેટર, મતલબ એ આપણે જે કોલોનીઝ જોઈએ છે એ રહેશે। આઈ વિલ શેર ધ ટુડે માય બેટર ઇન ગ્રુપ। મેં વિડીયો બનાવ્યો છે આજનો કે કેવી રીતે ફર્મેન્ટેશન વિધાઉટ પ્રોટીન, વિધાઉટ કાર્બ્સ લઈ શકાય। ઓકે, આજનું મારું ફર્મેન્ટેશન છે એ ખાલી ને ખાલી ફર્મેન્ટેડ રાઈસનું હતું, એ કુક કરેલા રાઈસનું છે, અને એ હાઈ કોલોની બેક્ટેરિયા છે। હું મોકલું છું ગ્રુપમાં, તમને એક્ઝેક્ટ આઈડિયા આવી જશે। પફીનેસ, ફીણા ના વળવા જોઈએ। બબલ્સ આવે દેટ મીન્સ કે બેક્ટેરિયા છે એ ઇન્ફિલ્ટ થઈ વધી ગયા છે, વધારે વધી ગયા છે, એટલે ફૂલવું જોઈએ, પણ એમાં હવા ના હોવી જોઈએ, પાણી ના હોવું જોઈએ, એ પોતાની સાઇઝ વધવી જોઈએ। આઈ વિલ શેર ધ પ્રોપર ફર્મેન્ટેડ વિડીયો। બરાબર, તો પ્રોટીન કે કાર્બ્સ ક્યારે પણ રાગીના ઢોસા બનાવો છો, ક્વિનોઆ યુઝ થાય છે, ઇવન યુઝ એની અધર મિલેટ, યુ હેવ ટુ સોક ઇન ધ ડિફરન્ટ વે, ડોન્ટ સોક ટુગેધર। ઓકે, ઓકે protein is always needs to high to soft and to prepare, but carbs is very less time to ferment.
ઓકે, આજે મને કઢી બહુ જ ભાવી અને રિયલી મજા આવી ગઈ. મને એવું થાય છે કે ધીસ ઇઝ ધ રિયલ મેથડ. આપણે આવી રીતે જ કઢી બિફોર કરી શું કીધું? શ્વેતાબેન બોલ્યા હતા. ના ના અમે બંને સાથે જ છીએ એક જ. ના મને પણ આ ડાયટ બહુ જ સારું લાગ્યું. અને ગયા વખતે મારાથી નહોતું થયું, આ વખતે એકદમ સરસ થયું. હજી કાલે મારો છેલ્લો દિવસ છે Good, ચલો, અને ફીલ ગુડ. ઓકે, ચલો બીજા કોઈને. Hi, ma'am. Hello. નેહલબેન, ક્વિક ક્વેશ્ચન ઓન ઇડલીના બેટરની વાત કરી તો કે જ્યારે તમે એને સોક કરો અને એમાં જે પાણી નાખેલું હોય અને જ્યારે એને તમે ક્રશ કરો તો જેમાં સોક કરેલું હોય એ પાણી વેધર રાઈસ વોટર ઓર દાલ વોટર, વોટ ડુ યુ ડુ અબાઉટ ધેટ? On the crushing time, don't use this water. After crushing, you have to ferment first better and then you add to this water. Actually, what happen? Less fermentation. अगर हम उसको वो कुक नहीं है, ठीक है, राइस और दाल नॉन कुक है और नॉन कुक में जो फर्मेंटेशन आता है ना वो मेटाबॉलिक फर्मेंटेशन रहता है, तो उस वाटर को यूज नहीं करना. लेकिन आज से बाद कभी भी दाल डोसा कुछ भी बनाते हो फर्मेंटेड राइस वाटर में ही बनाना है. दिस इज द बेस्ट कॉलोनी टू हेल्प योर गट. चाहे कितना भी हम फर्मेंटेशन खाए लेकिन वो हेल्प नहीं करता गट को. कुक फूड का जो फर्मेंटेशन है वही हेल्प करता है. राइस वाटर जब भी राइस बनाए तो उसके दूसरे दिन ही आप इडली डोसा बना लो. दिस इज द गुड बेटर. ठीक है, आपको न तो बटर मिल्क की जरूरत है न तो कर्ड की जरूरत है. राइस वाटर भर के रखो. ठीक है, चलो आई विल गिव सम इजियर टिप्स. मैं पूरे वीक का राइस वाटर बना के फ्रिज में रख, ग्लास बोतल भर के रख. ठीक है, वेनेवर यू नीड टू प्रिपेयर, इंस्टेंट डोसा बनाना है, इंस्टेंट चीला बनाना है, यू हैव टू मेक द द्राक्षा सर्व, यू हैव टू प्रिपेयर द काम्बुचा, तो फर्मेंटेड राइस वाटर इज ऑलवेज गुड. ठीक है, तो संडे बना लो, सैटरडे इवनिंग में स्टोर कर दो, संडे रात तक उसका फर्मेंटेशन अच्छा आ जाएगा. ग्लास के बोतल में अच्छे से ग्लास की बोतल वॉश करके भर लेना है. कोई बैक्टीरियोजेनिक इफेक्ट नहीं रहना चाहिए. नैरो जो हॉल होता है उसमें भरना है, फ्रिज में रख दो. इज वेरी इजीएस्ट. ठीक है, अगर बच्चे को देना है तो ऐसे ही दे दो, आपको पीना है तो पी सकते हो, आपको कोई फूड बनाना है तो ले सकते हो, लेकिन फ्रिज से डायरेक्ट निकाल के नहीं, रूम टेम्परेचर पे आने दो, उसके बाद प्रिपेयर करो. लेकिन कभी भी सीधा कच्चा मतलब जो ग्रेन है उसको पानी में भिगोते हैं, वो पानी फर्मेंटेड नहीं होता, उसमें बैक्टीरिया नहीं बनते. ठीक है, बैक्टीरिया हमेशा खाद्य फूड खाते हैं, वो अनखाद्य फूड नहीं खाते, तो वो पानी यूज नहीं करना चाहिए. उस पानी को रेस्ट दो, फर्मेंटेशन आने दो, उसके बाद जो जरूरत है तो आप राइस वाटर डाल के फर्मेंटेशन ला सकते हो. નેહલ, અને રાઈસ વોટર આપણે જે બનાવ્યું એમાં જે રાઈસ વધેલો હોય ફર્મેન્ટેશન થયા પછી તો વોટ ડુ યુ ડુ વિથ ધેટ અને એ રાઈસનું શું You can કરો? prepare so many recipes. खिचड़ी बनाओ, दाल सब्जी बनाओ, राइस में थोड़ा सा आटा डाल के पराठा बना दो, राइस का चीला बना दो, राइस की नूडल्स बना दो. there is so many recipes from fermented. ઓકે, તો એ યુઝ થઈ શકે ये રાઈટ यूज એનું? करवानो छे बिकॉज वो जो टूटते हैं ना छोटे छोटे दाने, अगर हाथ में लेते कट होता है तो जो दाने टूटते हैं वो टूटा हुआ दाना फाइटोकेमिकल बनाता है. इट्स वेरी गुड फॉर अवर बॉडी. તો આજે આપણે જે જવારની રોટલી, તમારે તો રાત પડી ગઈ પણ આજે અમારે અહીંયા હજી અત્યારે લંચ ટાઈમ થાય છે, તો એ જે જવારની કે ની રોટલી બનાવે એમાં રાઈસ નાખી દેવાય? यस, इट्स वेरी गुड इन टेस्ट. बहुत सारे Okay. लोगों ने आज बनाया. कढ़ी इज वेरी स्पेशल रेसिपी फॉर इनोवेशन बाय मी एंड इज वेरी हेल्पलेस. ठीक है, जब भी हम कोई बोलते हैं मुझे कि आप कढ़ी मना करते हो, लेकिन आई एम नॉट अपोज फॉर कढ़ी बट आई एम अपोज फॉर डेयरी. ठीक है, तो आप राइस वाटर की कढ़ी बनाना, बहुत ही टेस्टी बनता है. इट्स वेरी सिमिलर, वेरी हेल्पलेस. પણ કઢીમાં રાઈસ વોટર જોઈએ, નોટ ધ રાઈસ રાઈટ જે આપણે પલાળેલો राइस હોય તે. वाटर, fermented rice water. Got it. Yeah, thank you. નેહલ મેમ, વિદ્યા હિયર. या विद्याबेन, કેવું રહ્યું? Thank you. બહુ જ fine. Thank you so much. Lots of gratitude and blessings to you. મેમ, એક ક્વેશ્ચન છે. મેં દ્રાક્ષ જે બનાવ્યું ને, મેં 36 hours માટે બહાર રાખ્યું હતું, પણ મને એટલા બબલ્સ નહોતા દેખાયા
પણ સ્ટીલ મેં એને સ્ટ્રેઇન કરીને ફ્રીઝમાં મૂક્યું હતું, પણ મને એનું છે ને થોડી સ્ટ્રોંગ સ્મેલ આવે છે, તો એ સારું હશે કે બગડ્યું હશે? આઈ ડોન્ટ નો. બબલ્સ નહીં હોય તો સારું જ હશે, પણ તમે છે ને એક કામ કરજો, ગાળી અને ગ્લાસમાં રાખજો, પછી ગ્લાસને હલાવજો અને પછી આવી રીતે ઓબ્ઝર્વ કરીને જોજો કે એમાં છોટે છોટે જે મોલેક્યુલ્સ છે એ મૂવ ઓન થાય છે, હલતા હોય તો સારું હોય, એ સેટલ ડાઉન થવા માંડે તો ફંગસ હોય. આ તમે જોઈ લેજો. હા, એટલે અત્યારે જે મેં જારમાં રાખ્યું છે ને ફ્રીઝમાં, તો પાણી ઉપર છે ને નીચે પલ્પ બેસી ગયો છે. એ dates બરાબર નો. છે, પણ તમે ઓકે હલાવશો ને તો તમને આખા લિફ્ટિંગ થતા દેખાશે. ઓકે, એકવાર ઓકે ટેસ્ટ કરી લેજો, સ્મેલ કરતા પણ ટેસ્ટ કરી લેજો. ઇઝ ઇટ ગુડ? બબલ્સ નહીં હોય તો ખરાબ નહીં થયું. ઓકે, ઓકે, હું ચેક કરી લઉં. થેન્ક યુ. તો વેલકમ. નેહલબેન બબલ્સ થયા હોય તો દ્રાક્ષાસવ ખરાબ? ના, ખરાબ નહીં, એટલે બબલ્સ થયા પછી ફંગસ થવાના ચાન્સીસ છે. હજી બબલ્સ જ નથી થયા તો ફંગસ કેવી રીતે આવશે? ઓકે, ના કારણ કે મારું દ્રાક્ષાસવમાં બધા બહુ જ બબલ્સ થયા એટલે હું ઇઝ અ પૂછું ગુડ, છું. ઇઝ અ ગુડ ફર્મેન્ટેશન. ઓકે, એમાં ગુડ. કોઈ નેહલબેન, આપણે આ દ્રાક્ષરસો પીવાનું અથવા કંબુજા પીવું હોય તો અમને બહુ જ મસ્ત લાગે છે, તો એ નહીં પીવાય? બહુ જ હેલો મસ્ત લાગે પણ બહુ ના. હેલો મને તો એમ થાય આખી બોટલ પી જાવ, એટલું ભાવ્યું. ના, પણ બહુ એટલે નહીં પણ પીવાય, ઠંડુ એનાથી નહીં ઊંઘ પીવાય? બહુ જ આવશે. હમ. આમે હું તો ઊંઘું જ છું, ગાડી ચલાવતા ઊંઘી જાઉં છું. ના, ઠંડુ બહુ ના પીતા, રૂમ ટેમ્પરેચરે પીવાશે. ઓકે. ઓકે. Hi, ma'am. યસ રાધિકાજી, વિડીયો ઓન કર દો. Hi, ma'am. હેલો. Ma'am, from tomorrow, so I had to start the same diet which you have told me for about smoothie, no? Yeah, you have to start with the smoothie. Yeah, same thing until 24th. Until 24. Ma'am, then I had to take that apple cider vinegar also and draksha sav also for 15 days. For 15 weeks. That's it, right? Yeah, correct. Okay, how does it feel in workshop? It's very good, ma'am. Starting, I felt that I had to prepare so much. Why I have joined this one like that? I felt. Then now I'm feeling that it has finished so fast. I'm also missing so many recipes also from tomorrow. Yeah, you have to connect with the Draksha Sav. So Draksha Sav आपको energy देगा. You have to go forward for that. Okay. Okay, ma'am. Yeah. Okay. Okay. Thank you, ma'am. Well done. चलो, anyone needs to follow up? बोलो कोमलबेन, unmute करो. આપણે મને તો સારું જ લાગ્યું. આજે મને ઊંઘ વધારે આવે છે. મને એવું લાગ્યું કે આજે મારું શુગર વધારે લો થતું હોય એવું. ઊંઘ હતી ને એ ઘણી ઓછી થઈ. Very good. આજે તો મને બહુ આમ ખાવાની ઓછી ઈચ્છા થઈ. સાંજે મને થોડી ભૂખ લાગી, પણ ખાવામાં કેવું કે ક્વોન્ટિટી મારી થોડી ઓછી થઈ ગઈ એમ. ભૂખ લાગે પણ ક્વોન્ટિટી ઓછી થાય કે વધારે ખાવું એવું નથી થતું. એટલું મને આજે ઘણું, મતલબ આટલા દિવસમાં મને આજે વધારે ફિલિંગ થયું. ઊંઘ તો મને ભલે હું 10:30 નથી સૂતી, પણ રાત્રે જે સૂતી હતી ને તો અમુક આમ જેટલી એકદમ આમ કન્ટિન્યુઅસ જેવી ઊંઘ આવે ને કે સવારે જ પડી જાય એવી મને છેલ્લા 4-5 દિવસથી તો મને એટલી મસ્ત ઊંઘ આવી છે. વેરી ગુડ. ચલો, ગુડ. કાલે એકવાર ફાસ્ટિંગ સુગર ચેક કરી લેજો, પછી એવું લાગે તો મને કોલ બેક કરી દેજો. ઓકે. ઓકે. પછી બીજું મારે તમને પૂછવું છે, આપણે જે તમે આ ફર્મેન્ટેશન કીધું, કઢીનો એક પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરી દીધો. હા, મને આમ ખરેખર હું કઢી આવી રીતે જ બનાવીશ. આવી રીતે ભાત વધશે ને એટલે તો હું આવી રીતે બનાવી જ દઈશ રેસીપી. એ તો બહુ સરસ છે. અને બીજું મારે તમને પૂછવું છે કે હું છે ને ઘંટીમાં આ દળીને રાખું છું, આપણે ઢોકળાનું અને ઇડલીનું, તો એ યુઝ થાય કે ના થાય? એમાં ફર્મેન્ટ એકચ્યુઅલી એમાં તમને ગટ બેક્ટેરિયા ડેવલપ ના થાય, લોટમાં ગટ બેક્ટેરિયા ડેવલપ ના થાય. ઓકે. ડેવલપ કરવા હોય તો ગ્રેન જોઈએ, અને ગ્રેનનો યુઝ કરીને જ ફર્મેન્ટેશન લાવવું જોઈએ. લોટ તો આપણા ઇઝીએસ્ટ માટે છે. ઓકે. તો એમાં ફર્મેન્ટેશન આવે, પણ ઇટ્સ નોટ ક્રિએટિંગ ધ હેલ્ધીએસ્ટ ગટ બેક્ટેરિયા. એટલે એવું કરાય. ઓકે, આઈ વિલ સજેસ્ટ સમ હેલ્પ ફ્રોમ ધેટ. તમે 50% લોટનું આથું નાખો અને 50% તમે પલાળી અને નેક્સ્ટ લેવલ બનાવો, તો ઇટ્સ ક્રિએટિંગ ગુડ ફોર ધેમ. ઓકે.
નેહલબેન સોરી એક ક્વેશ્ચન વધારે. આપણે ભાત જે ઓસાવીએ એ ઓસામણને યુઝ કરી શકાય એઝ અ રાઈસ વોટર કે એ નહીં કરવાનું? ભાતને ઓસાવાના જ નથી. હવેથી તમારા બધાએ એક બેઠી ટેકનિક બનાવવાની છે. ભાતને ઓસાવીએ તો એનું કમ્પાઉન્ડ સ્ટાર્ચ જતું રહે અને પ્યોર સ્ટાર્ચ વધે અને ક્રિએટિંગ ધ સો મેની કાર્બ્સ ઇન યોર બોડી. સ્ટાર્ચ છે ઉપરનું એ હેલ્પ કરે કાર્બ્સને એબ્સોર્બ કરવા માટે અને બોડીને હીલિંગ લઈ જવા માટે. એટલે હંમેશા બેઠું ભાત જ બનાવવાનું. ઓસામણ કાઢો તો ક્યારે ફેંકવાનું નહીં. ઓસામણનો રીયુઝ થાય, દાળમાં નાખી શકાય, રોટલી અથવા તો રોટલો બનાવો છો તો એની અંદર નાખી શકાય અને ઓસામણથી હેર વોશ પણ કરી શકાય. ઓસામણની અંદર ગુડ મેલેટિનિન નામનું એક તત્વ હોય છે, ઇઝ વેરી ગુડ ફોર યોર સ્કિન એન્ડ હેર. એટલે ઓસાવાની જરૂર નથી, બેઠો ભાત જ કરવાનો અને બેઠા ભાતનું જ ફર્મેન્ટેશન લઈ આવવાનું અને એમાં સૌથી વધારે બેક્ટેરિયા ડેવલપ થાય. ઓસાવી દેશો તો ઉપરનું લેયર જતું રહેશે. પછી જે ભાત વધે છે એને ખાવા માટે બેક્ટેરિયા એટલા ફાસ્ટ નહીં આવે, તો તમારું ફર્મેન્ટેશન થશે જ નહીં. ઇટ્સ ટેક ટુ લોંગ ટાઈમ ટુ ફર્મેન્ટ. તો ઓસાવાના નથી. ઓકે, બેઠા જ બનાવવાના. અને જો કદાચ વધારે પાણી રહી જાય ને તો સૌથી બેટર છે ઉપરથી ભાત લઈ લેવાના, નીચેનું પાણી રાઈસ લેવા દેવાના, બીજું વધારે પાણી નાખીને ફર્મેન્ટ કરી દેવાનું. એની ઘણી બધી રેસીપી બને, 1000થી વધારે રેસીપી બને ફર્મેન્ટેડ રાઈસની. એટલે એ ફેંકવાના તો નહીં જ. ઓકે, પછી બીજું મારે પૂછવું કે આપણે ક્યારેક આપણી જોડે રાઈસ બનાવ્યા હોય અને વધ્યા હોય તો એનું તમે હમણાં ચિલ્લા ને બધું કીધું, એ આપણા ડાયાબિટીસ વાળા માટે ખાઈ શકાય? બધા માટે ખબર. રાઈસ 6 કલાક પડ્યો રહીએ એટલે એનું કાર્બ્સ અડધું થઈ જાય. માની લો કે એક વાટકો ભાત ખાવ છો અને તમારું 140 સુગર થાય છે, તો એક વાટકો ભાત 12 કલાક પછી 6 કલાક પછી પડેલો ભાત ખાવ છો તો સુગર તમારું 60 કે 40 ની વચ્ચે જ પડે. ઓકે ઓકે, એટલે વાસી ભાત છે એ તો બહુ જ સારા, પણ એને ફરીથી ગરમ નથી કરવાના. ઓકે, તમે આ રેસીપી બનાવીએ તો એમાં તો ગરમ થાય ને? ફૂડમાં ગરમ થાય, એ તો આપણે ફર્મેન્ટ કરીએ છીએ એટલે થાય. પણ આપણે ખાલી ભાત ખાઈએ છીએ તો દાખલા તરીકે આપણે ભાત બનાયેલા પડ્યા છે અને હવે એને આપણે મુઠિયા બનાવીએ કે એના થેપલા બનાવીએ તો પછી એ વખતે ઓકે, તમે એમાં નાખી દો છો, એ આપણે ફર્મેન્ટેશન લાવવા માટે નાખીએ છીએ, બરાબર. પણ માની લો કે તમે આજે ગરમ ભાત બનાવ્યો તો આજે ઠંડો ભાત છે એની અંદર નાખી દેવાનો, એ ભાતને ફરીથી ગરમ નહીં કરવાનો. ઓકે, બોલો કૃપાબેન, અનમ્યુટ કરો. હેલો મેમ. હેલો, હેલો, અવાજ આવે છે? વિડીયો નથી આવતો. યસ, બોલો. હા, હવે આવ્યો. ઓકે. હા મેમ, મને ગટરી વર્કશોપ બહુ જ સારું લાગ્યું. ફીલિંગ હેપી ઇન એવરી મોમેન્ટ. અને મારું ઈડલી એટલી સારી નહોતી બની વિધાઉટ ટીનો. ગરમ ગરમ હતી ત્યારે થોડી સારી લાગી, પણ પછી આમ થોડી હાર્ડ થઈ જતી હોય ને એવું લાગ્યું. અધરવાઇઝ કંબુચા બી બહુ ગમ્યું, સોસરોટ બહુ જ સરસ થયું છે. અને રુદ્રાંશને ને બધાને ફેમિલીમાં બધાને બહુ ગમ્યું સોસરોટ અને કંબુચા. દ્રાક્ષા સૌની મેં આજે કેન્ડી બનાવી દીધી છે, પોપ્સિકલ ટાઈપનું. વેરી ગુડ. તો ચલો, કાલે યુઝ કરીશ, પણ મજા આવી એકદમ. મને હેડેક કે એવું કઈ મને થયું નથી મેડમ, કે એટલા બધા ડાયરિયા પણ નથી થયા. તો ઇઝ ઇટ ઓકે? ઇઝ ઇટ ઓકે? ઇઝ ઇટ ઓકે? ઓકે, ઓકે ઓકે, થેન્ક યુ. થેન્ક યુ. બોલો મેહાબેન, અનમ્યુટ કરો. નહીં, બસ મને બહુ જ એન્જોય કર્યું ફૂલ ડાયટ. જે મને બહારના ફૂડની ક્રેવિંગ થાય કે એ બધું નહીં. આઈ એટ બેટર એન્ડ ફેલ્ટ એનર્જેટિક. ઊંઘી પણ બહુ બધું અને એટ ધ સેમ ટાઈમ આઈ એટ મોર એન્ડ લોસ્ટ વેટ. થેન્ક યુ. એન્જોય. બોલો બેનાબેન. મેડમ મને થોડુંક એટલે પેલું ફર્મેન્ટેડ લિક્વિડ લેતી હતી ને, તો એનાથી મને શરીર બહુ દુખતું હતું, આખું બોડી પેઇન કરતું હતું બહુ જ. પછી વચ્ચે એક દિવસ ફાસ્ટ આવ્યો તો એ સોરી ના ના લેમન બિલકુલ નહીં. તમે જે મેથડ બતાવી હતી ને સેમ એ જ મેથડ થી હું કરતી હતી. પણ આના ફર્મેન્ટેશનમાં જોઈન્ટ આરે કોઈ લેવા દેવા નથી. ડાયરેક્ટલી તમારા જોઈન્ટ ઉપર ઇફેક્ટ ના કરે, પણ માઇટ બી ગેસિયસ થયું હોય અને ગેસને લીધે જોઈન્ટ થાય. નેક્સ્ટ 2 to 3 days અર્લી મોર્નિંગ 1 સ્પૂન ઘી લેવાનું સ્ટાર્ટ કરી દેજો, કાં તો કોકોનટ ઓઇલ. હા, હું ઘી લઉં છું. તમે જયારે મને એકવાર પહેલા કીધું હતું ને કે હરડે ના બદલે તમારે ઘી લેવાનું, ત્યારથી હું ઘી જ લઉં છું. એટલે ઘી થી મને બહુ જ સારું છે.
મતલબ અત્યારે તો હવે બિલકુલ મેં હરડે ને બધું મૂકી જ દીધું છે. મને એનાથી મતલબ મારું પેટ તો ખૂબ સાફ આવે છે. મતલબ બહુ જ બેનિફિટ થયું હતું એ પછી તો. અને એનાથી મારું વેઇટ ગેઇન બી થયું. લગભગ 2.5-3 કિલો વેઇટ ગેઇન બી થયું. બાકી તો બહુ લાંબાથી મારું વજન ઉતરતું જ જતું હતું. પણ પછી ઘી પીવા પછી મને બહુ જ સારું રહ્યું. મારી સ્કિન પણ ઇમ્પ્રુવ થઈ, જે વધારે પેલી ડ્રાય થઈ ગઈ હતી એમાં. એટલે એ તો મને બહુ જ બેનિફિટ થયો. પણ આમાં ખાલી મને થોડુંક એવું લાગ્યું કે એટલે જયારે આપણે ઈડલી ને એવું ખાઈએ ત્યારે વાંધો નતો આવતો. પણ સવારે જયારે હું પેલું રાઈસ વોટર ને કાંજી વોટર પીતી હતી ને, તો મને બપોર સુધી એવું થાય કે જાણે આખું શરીર એટલું બધું દુખે છે, પેઇન કિલર લેવી પડશે એવું થઈ જાય આમ. ના, એકચ્યુઅલી એનાથી તમને ગેસીસ થતું હોય ને, ગેસને લીધે જોઈન્ટ પર ઇફેક્ટ આવે. અધરવાઇઝ હાઈરીચ બી12 અને કાંજી છે ને, એ તો જોઈન્ટ પેઇનને રિડ્યુસ કરે. તમે હમણાં થોડાક દિવસ એવું હોય તો સવાર સાંજ 2 ટાઈમ પી લેજો, એટલે તમારું જોઈન્ટ ઉપર ઇન્ફ્લામેશન છે રિડ્યુસ થઈ જશે. એવું લાગે તો મને કોલ બેક કરી દેજો. ઓકે, અચ્છા, એટલે સવારે ને સાંજે 2 ટાઈમ કન્ટિન્યુ રાખવાનું એમ? કન્ટિન્યુ લેજો, 3-4 દિવસ. ઓકે, ઓકે, બરાબર. ભલે. અને મેમ આ એટલે ઓસાવેલું ભાત અત્યાર સુધી તો હું ચંદ્રેશને ઓસાવેલો જ ભાત આપતી હતી. તો ઓસાવેલું નહીં આપવાનું એવું? ના, ઓસાવેલો ભાત ડાયાબિટીક પેશન્ટને ક્યારેય નહીં ખાવાનો. ઓકે, ઇટ્સ નોટ ડેન્જરસ. બેઠો અચ્છા. ભાત જ બનાવવાનો. ઓસાવેલા ભાતમાં તો તમે રાઈસને ડાયજેસ્ટ કરવાનું જે કમ્પાઉન્ડ સ્ટાર્ચ છે એ નીકળી જાય. વિડીયો અને ઓડિયો એટલે બધું હવે ચાલે એમાં છે ખાલી મારે. સુગર જ વધે. બરાબર? ઓકે. ઓકે, બોલો ચેતનાબેન. હલો. મેમ એક લાસ્ટ ક્વેશ્ચન છે. હમ એટલે ફેમિલીમાં એક અમારે બેબી છે, જે મારી કઝિનની ડોટર. એને એપિલેપ્સી છે, મતલબ એને ચક્કર આવે છે ને પડી જાય છે ગમે ત્યારે. તો એના માટે તમારી પાસે કોઈ સોલ્યુશન છે? એમને મને કોલ કરાવી તો દો. હું એને વાત કરું. હે, એમનો નંબર આપી દેજો મને. ઓકે, આપણે સોલ્વ કરી શકાય? આરામથી. એપિલેપ્ટી ઇઝ ધ ન્યુરો ડિઝીઝ વિચ જનરેટેડ બાય ધ ગટ્સ. ઓકે, એમને મારો નંબર આપજો, હું એમની સાથે વાત કરી દઈશ. ઓકે, ઓકે, થેન્ક યુ સો મચ મેમ. વેલકમ. હલો, નેહલ મેમ. કેમ છો ચેતનાબેન? મસ્ત. કેવી રહી તમારી ઊંઘ? એમાં થોડુંક છે, રાત્રે ઉઠવું પડે 2-3 વખત, પણ પહેલા કરતા બેટર. સારી ઊંઘ આવે છે. બપોરે બી સુઈ જઉં છું અને મૂડ બી સારું રહે છે. મને જે પગ બહુ જ દુખતા હતા, મને એમ હતું કે કંઈક મને મેન્ટલી છે, શું ખબર નહીં. પગ બહુ જ દુખતા હતા, મને સારું છે એમાં. અને મને 2 દિવસ હું આખો દિવસ કામ કરું છું, મને થાક નથી લાગતો. વેરી ગુડ. ચલો, ગટ. હા. તમારા અને ગટમાં અત્યારે શું કરવું? ચાલુ રાખવું? એપલ વિનેગર લેવાનું? એપલ વિનેગર અને દ્રાક્ષરસ કન્ટિન્યુ રાખજો. પછી વચ્ચે જરૂર પડે તો 30 પાછું ચેન્જ કરજો. 30 ml કેટલું 30 લેવાનું? ml. આ કાંબુચા તો ખાલી 15 ml ઇનફ છે. ઓકે, દ્રાક્ષરસ લેવાય 30 થી 50. દ્રાક્ષરસમાં તો એવું છે કે એકવાર મોઢે મૂકશો ને એટલે પછી નીચે ના હા, રિયલી મેમ. જાય. ઓકે, એટલે એ હા, થોડુંક જ લેવાનું છે. એ સ્લીપને ઇન્ક્રીઝ કરે અને તમને હા. રિલેક્સેશન રાખે. ઓકે, અને પેલું કોબીજ નું બનાયેલું એ તો પતે ત્યાં સુધી ખાજો. પછી ફરીથી હીટ હોય તો નહીં બને, ગરમીમાં એ ખરાબ થઈ જશે. અધરવાઇઝ અને ફરી એનું પાણી છે, એની અંદર જ રહેવા દેવાનું છે. એ કાઢતા નહીં, નકર ફૂગાઈ જશે. એટલે ખાલી અંદરથી કોબીજ જ ને એ જ લઈને ખાવાનું ને? હમ ઓકે, છે ત્યાં સુધી કમ્પ્લીટ કરીએ હે ને? છે ત્યાં સુધી કમ. ઓકે, અને રેગ્યુલર ફૂડ હવે ચાલુ કરવાનું? કાલથી રેગ્યુલર. ઓકે. અને મારે કન્ટિન્યુ કરવું હોય તો તમારી સાથે? મને મેસેજ કરી દેજો. ઓકે. ઓકે. ઓકે, બોલો થેન્ક યુ. નેહલ બેન, એક બોલો. ક્વેશ્ચન. મારે ગઈકાલે થોડુંક રાઈસમાં મેં બનાવ્યું હતું પેલું આ બધું પરમ દિવસનું રાઈસમાં મેં આજે બનાવ્યું, એટલે પાણી રાઈસ વોટરમાં. તો હવે એ રાઈસ ફેંકી દો ફર્મેન્ટેડ? કારણ ના કે ના, પરમ સારા દિવસનું. હશે. ફ્રીજમાં મૂકી દો, સારા હશે. હા, એ તો ફ્રીજમાં જ મૂકેલું. એટલે મેં આજે મારે કેવું હતું, પરમ દિવસે થોડું વધારે હતું, એટલે પછી મેં ફ્રીજમાં મૂકી દીધું. ને આજે મેં વાપર્યું, પાણી વપરાઈ ગયું પણ રાઈસ રહ્યો છે. તો રાઈસ ને શું કરું? તો રાઈસ તો બહુ બધી જગ્યાએ કામ લાગશે. ખાલી સેવ એટલે બનાવી દે તોય ચાલશે. એટલે એ તો ચલો, કઈ પણ ઇઝીએસ્ટ કરું. રેસીપી કહું? હા, બોલો. થોડોક ચણાનો લોટ અને ચોખા અને મિક્સરમાં નાખીને ક્રશ કરી દેવાના. પછી સંચામાં સેવ ભરી અને આપણે નોનસ્ટિક તવી હોય ને એના ઉપર પાડી દેવાની. રોસ્ટેડ સેવ થઈ જશે. બહુ જ ટેસ્ટી. અરે વાહ,
પણ એ પાણી વાળું છે, હા, એકદમ પણ પાણી 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 છે. જેટલું પાણી છે ને એટલો જ ચણાનો લોટ નાખજો, વધારે ના નાખ. એટલે થોડું ડ્રેન કરી નાખું ને, બહુ આમ ના ના લિક્વિડ ના, લિક્વિડ ડ્રેઇન છે. ના કરતા, એને લીધે જ બાઇન્ડિંગ આવશે ને સોફ્ટ બનશે. આ રોસ્ટેડ તેલ વગરની સેવ તૈયાર થશે અને બહુ જ સરસ લાગશે. શું વાત કરો છો? ઓકે, ફેંકતા નહીં, બહુ ઓકે સરસ બનશે. ઓકે, ઓકે, થેન્ક યુ. હા. બોલો દીપાલીબેન. સો જસ્ટ ધ જનરલ ફીડબેક, જો બધાએ કહ્યું એ રીતે કે કમ્પેરેટિવલી મચ ઇઝી. આઈ થિંક અહીંયાનું ઈસ્ટ કોસ્ટનું વેધર એટલું કોઓપરેટિવ નહોતું, એટલે થોડું વચ્ચે ફ્રસ્ટ્રેશન આવી જતું હતું કે મારું કેમ ફર્મેન્ટ નથી થતું, કેમ આમ નથી થતું, હું બરાબર કરું છું કે નહીં. જે વસ્તુ તમને ત્યાં અડધો દિવસ, એક દિવસ થાય, અહીંયા આગળ એ વસ્તુને 2 થી 3 દિવસ થયા. મને કંબુચા લિટરલી 5 દિવસ પછી ગઈકાલે મેં એના ઉપર ફોર્મ જોયું કે ઇવન દ્રાક્ષાસવમાં. પણ આઈ ડેફિનેટલી થિંક કે ઇટ્સ અ ઇઝીયર ડાયટ, ઇફ યુ પ્લાન ઇટ વેલ એન્ડ ઇફ યુ નો ઇટ અહેડ, થોડું પ્રેપ કરી દો તો. એક દિવસ મને એવું થઈ ગયું હતું, દેટ વોઝ થર્સડે મોર્નિંગ, કે જ્યારે એટલી બધી ઊંઘ આવતી હતી કે આમ ઊભું ના થાય, ને મારી ફેમિલી સિચ્યુએશન હતી કે મારે ઊભા થઈને કશે જવું પડે એવું જ હતું. સો આઈ ફેલ્ટ કે મને થોડું બ્રેઇન ફોગ જેવું કે થોડુંક ડિસઓરિએન્ટેશન થઈ ગયું હતું, બિકોઝ યુ આર સો સ્લીપી બટ યુ કેન સ્લીપ. સો આઈ ડોન્ટ નો કે કેમ એટલી બધી ઊંઘ આવી ગઈ, અને એવું ફીલ થતું હતું. બપોર પછી બરાબર થઈ ગયું, પણ દેટ અડધો દિવસ જે હતો ને, દેટ વોઝ લિટલ ડિફિકલ્ટ તે દિવસે. આઈ થિંક બાકીના બધા દિવસ સારું હતું. ફર્સ્ટ ડેના થોડુંક સ્લાઇટ હેડેક જેવું રહ્યું, પણ નથિંગ મેજર એનીથિંગ એલ્સ. એન્ડ યસ્ટરડે માય સ્ટમક ગોટ ક્લીન, લાઈક રિયલી અમેઝિંગ. ઓ માય ગોશ, આઈ જસ્ટ ફેલ્ટ કે આખું બોડી લાઇટ થઈ ગયું છે. ફોર અ મોમેન્ટ આઈ ફેલ્ટ કે મેં કશું ખાધું એટલે મને ડાયરિયા જેવું કેવું થઈ ગયું કે કેમ એમ. પણ એ થઈ ગયા પછી નથિંગ એલ્સ હેપન એન્ડ આઈ ફેલ્ટ સુપર લાઇટ. સો ડેફિનેટલી વન ટ્રાય ધીસ અગેન, જ્યારે અહીંયા આગળ થોડું ટેમ્પરેચર સારું થઈ જાય તો આઈ ડુ વન ટ્રાય ધીસ અગેન. સો આઈ વિલ રીચ આઉટ ટુ યુ એન્ડ હોપફુલી બ્રિંગ કપલ અધર મેમ્બર્સ મારા ફેમિલીમાંથી, કે આઈ ફીલ કે એ લોકોને પણ હેલ્પફુલ થશે. એન્ડ આઈ થિંક યુ આર અવેર ઓફ વન ઓફ ધેમ. સો એને બી કરાવવું છે મારે, કે આઈ ફીલ કે એને ઘણું હેલ્પ થશે. સો થેન્ક યુ. I really enjoyed all the education sessions. Couple of them હું join ના કરી શકી, પણ amazing sessions. I mean, I literally enjoyed so much, learned so much, enjoyed so much. So thank you for taking time and taking us to this journey. स्लीपिंग इज अ गुड फिनोमिना, ठीक है, सबको सोना ही है, बिकॉज आपके गट तभी जाके बहुत ही अच्छे बनते हैं जब हम सोते हैं. तो इट्स अ गुड, इट्स नॉट द नॉर्मल पार्ट फॉर योर किड्स, सो डोंट वरी फॉर दैट. बोरो पालू बेन. હેલો મેમ. हेलो. હા નેહલબેન. कौन बोले छे? अश्विनी जी. मैं बोली थी बट हाँ आई बोल रही थिंक हूँ. या बोलिए बोलिए. मुझे पूछना है कि मेरा कल का लास्ट डे है. हम्म, जो वो राक्षस बनाया है वो सबको दे सकते घर में या नहीं दे सकते? सबको दे सकते, लेकिन आपका पहले खत्म करना है ना. आपका हाँ. गट पहले, उसके बाद किसी और का. तो पहले आपका कंटेन निकाल के रखो, उसके बाद जितना बचता है किसी और को देना है ना. ओके. हाँ, और मुझे 2-3 चीजें बात करनी है, तो कल कनेक्ट कर सकते हैं अब? कल मैं फ्री हूँ, आप मुझे कॉल कर देना, ठीक है. ठीक, चलेगा. ठीक. हाँ. ओके. Then बाकी चलिए. और हाँ, जो कढ़ी आपने बोला था उसमें हम्म. कोकम डाल सकते हैं इंस्टेड ऑफ लेमन? कोकम मत डालना, आप लेमन ही डालना और पकने के बाद डालना. कोकम को अगर डालना है तो उसको भिगो के रखना, फिर उसका पानी डालना, डायरेक्टली कोकम यूज हाँ, वही मतलब पानी. चलेगा. चलेगा, पानी ओके, डालना, ठीक है. ठीक हाँ. है. हाँ. હાલો ઓકે. નેહલ મેમ, બોલો ચેતનાબેન. મારી સ્કિન એકદમ ડ્રાય થઈ ગઈ છે અને હા, લિપ્સ મારા હા ફાટી ગયા છે, તો શું કરું? મને કાલે કોલ કરજો, આઈ વિલ ગાઈડ યુ. ઓકે, મને દેખા નહીં તમારી સ્કિન ડ્રાય છે. બોલો પાર્વતીબેન, અનમ્યુટ કરો. હા નેહલબેન, બસ જસ્ટ ફોર ફીડબેક.
અમેઝિંગ સેશન, જોરદાર વર્કશોપ. જેવી રીતે મેં બધા જ તમારા હેન્ડલ કર્યા છે. સે ગુડ બાય ટુ ડાયાબિટીસ, પીસીઓડી, હેરનું, લીવરનું, ઇન્ટેસ્ટાઇનનું, બરાબર. અને હજી પણ હું એવું ઈચ્છું કે હું કનેક્ટ જ રહું. ખરેખર બહુ જ મજા આવી. મારું થોડું સોશિયલ ડિસ્ટર્બન્સ હતું, એટલે મારું થોડું લેટ ચાલુ થયું 2 days. એટલે હજી મારું મંડે બધું પૂરું થશે. બટ મને ખૂબ જ મજા આવી. મારું કોન્સ્ટિપેશન પહેલા દિવસ જતું રહ્યું. સ્કિન તો એટલી સરસ ગ્લોઈંગ છે કે આજે મારી બર્થડે છે તો મને બહુ બધા કોમ્પ્લિમેન્ટ્સ પણ મળ્યા. અને મને ખરેખર બહુ જ મજા આવી. અને લગભગ થોડું સ્લીપનો પ્રોબ્લેમ થયો, પણ એ નોટ ડ્યુ ટુ ફૂડ. એ મારું થોડું સોશિયલ ડિસ્ટર્બન્સીસ બધું હતું, કદાચ એના લીધે હતું. બાકી મને કોઈ પણ હેડેક પણ માઇલ્ડ આવ્યું હતું અને એ મેં ટેકલ કર્યું. આ અઠવાડિયા દરમિયાન મેં કોઈ પણ એક્સ્ટ્રા મેડિસિન નથી લીધી. ઇવન કોઈ પણ પેઇન કિલર નહીં, કોઈ પણ એસિડિટીની નહીં, કશું જ નહીં. પેટ પણ એકદમ, સ્ટમક એકદમ સરસ ક્લિયર થઈ જાય છે. આખો દિવસ બહુ એનર્જી ફીલ થાય છે. મારું 1 કિલો વેટ પણ લોસ થયું અને મને ખરેખર બહુ જ મજા આવી. તમે ખરેખર મારા તો જીવનમાં એટલીસ્ટ લાઈફ સપોર્ટર બનીને જ આવ્યા છો, લાઈક વેન્ટિલેટર. મને ખરેખર બહુ જ મજા આવી. થેન્ક યુ સો મચ હાર્ટલી, ખરેખર. અને થેન્ક યુ હિરેન, મેડમ, હેપી બર્થડે. થેન્ક યુ. અને હિરેનને પણ મેં દ્રાક્ષ કાલે આપ્યો હતો અને આજે તો મેં નથી આપ્યો, પણ ખરેખર બહુ જ મજા આવી. અને હવે હું મારા સન માટે તમને કન્સલ્ટ કરીશ. મારું પતશે એટલે વર્કશોપ, એની એક્ઝામ પતે એટલે થોડુંક એને વેઇટ માટે તમે કરી આપજો, બરાબર? ડન. ચલો, થેન્ક યુ મેડમ. બોલો અસ્મિતાબેન. નેહલબેન, કઢી બહુ જ મસ્ત બની હતી હો. મસ્ત બની હતી. હા, એ ઘરમાં આવી જ રીતે કઢી બનાવવાની. ચલો આપણે થોડુંક સમજી લઈએ કઢીને. જ્યારે આપણે નોર્મલ કઢમાંથી બનાવીએ છીએ, એટલે દહીંમાંથી કે છાશમાંથી બનાવીએ મેં છીએ. લીંબુ પણ કઈ નાખ્યું જ નહોતું, ખાલી કઢીમાં બેસન નાખીને જ, મસાલા નાખીને જ બનાવેલી હતી. મસ્ત. આપણે એનિમલ પ્રોટીન વાપરીએ ને, દહીં છાશ, તો એનું એસિડિક છે એ તમારા બોનને અને કિડનીને બહુ જ ડેમેજ કરે. અર્લિયર કઢી ત્યારે ખાતા જ્યારે લોકો બીમાર પડતા, કફ કોલ્ડ થતું અને હેવી કામ કરતા ત્યારે, કારણ કે એ હીટમાં જાય એટલે એના ક્રિસ્ટલ તૂટે અને કઢી યુઝ થાય. જો ઘરમાં રહેવાનું હોય અને હેવી વર્ક ના હોય તો એનિમલ તો ખવાય જ નહીં, મતલબ દહીંની છાશની કઢી ખવાય જ નહીં. આ કઢી બહુ જ હેલ્ધીએસ્ટ છે. બાળકોને ખવડાવો, મોટાને ખવડાવો, નો જોઈન્ટ પેઇન થાય, કશું જ ના થાય. ઓકે, એટલે હવે જ્યારે ભાત બનાવો, કઢી બનાવવાનો પ્લાન કરીએ તો થોડાક રાઈસ વધારે બનાવી દો. And you have to prepare for. એક ખીચડી બનાવેલી મારી પડી છે, કાલે ખાઈ શકું? ખીચડી ખવાશે, વાસી ખીચડી ખવાય, પણ ખીચડીમાંથી ફર્મેન્ટેશન વોટર નહીં બને. એટલે ખીચડી છે પણ મેં ફેંકી નથી, રાખી છે. હા, એ ખવાશે. એ રેસ્ટોવર ફૂડ તો ખાઈ જ જવાનું અને ખાવું જ જોઈએ, કારણ કે એમાં સારા ગટ બેક્ટેરિયા ડેવલપ કરવાની કેપેસિટી હોય. પણ ખીચડીમાંથી ફર્મેન્ટેશન ના બને, એટલે તમારે રાઈસ જ બનાવવાના અને હળદર, મીઠું કે તેલ નાખ્યા વગરના, અને પ્લેન રાઈસનું જ ફર્મેન્ટેશન યુઝ કરવાનું. અને હવે કાલેથી મારે, આપણે સન્ડે ચાલુ કર્યું, આજથી પૂરું થઈ ગયું બધું, તો કાલેથી શું બધું રેગ્યુલર રૂટીન જે ફૂડ પહેલા આપણે જે લેતા હતા સ્મૂધી સાથે, સ્મૂધીને પાછી વેલકમ કરી દેવાની હતી. નેહલબેન, મારે બધાને એક મેસેજ પણ આપવો છે. યસ, બોલો. હું બધાને એવું કહીશ કે તમારું જે કોસ્મેટિક્સ છે, લગભગ હું તમારા કોન્ટેક્ટમાં આવી ત્યારથી હું તમારા બધા સાબુ પર્સનલ યુઝ માટે અને મારા બધા પેશન્ટ માટે પણ યુઝ કરું છું. લગભગ બહુ જ સરસ, ક્યારેય કોઈ સ્કિન પ્રોબ્લેમ થયો જ નથી. મારી સ્કિન બહુ જ ડ્રાય હતી, તો એમાં પણ મને બહુ જ ફરક પડ્યો છે. તમારા બનાવેલા રોઝમરી શેમ્પૂ, મારા પેશન્ટોના ફીડબેક બહુ જ સારા આવ્યા છે. અને મેં ખુદ પણ એ યુઝ કર્યું. મારા જે વાળ પાતળા હતા એ મને અત્યારે બહુ જ સારા લાગે છે. તમે મારું ગ્રોથ આજના મારા સ્ટેટસમાં જોયો હશે એરનો. પ્લસ તમારું પ્રોટીન માસ્ક એ પણ બહુ અમેઝિંગ છે. તો હું બધાને એ વસ્તુ કહીશ કે નેહાલબેનની જેટલી પ્રોડક્ટ કોસ્મેટિક્સ છે, હેરની, સ્કિનની, અમેઝિંગ છે. લગભગ છેલ્લા હું 3-4 વર્ષથી વાપરું છું અને મારા પેશન્ટોમાં પણ યુઝ કરું છું. ઇવન એમના પેડ્સ, પછી એમના જે એમણે હેર કલર બનાવ્યો છે, એમોનિયા ફ્રી હેર કલર, એ પણ એટલો અમેઝિંગ છે કે એમાં તો મારા લગભગ આઉટ ઓફ કન્ટ્રીના પેશન્ટો લગભગ 10 પેકેટ્સ લઈ જાય છે. અને એનું બહુ જ મસ્ત રિઝલ્ટ છે કે રેગ્યુલર યુઝ કરવાથી એમાં વાળમાં જે સફેદ છે એ પણ બહુ લોંગ ટાઈમ સુધી બ્લેક કે બ્રાઉન રહે છે. બીજું તમારું પેલું ખજૂર પાક તમે જે આપ્યું હતું, તમારા સીડ્સ વાળા મુખવાસ, પછી તમારા જે પેલી મને બધી બિસ્કિટ્સ ટાઈપની બધી આઈટમ્સ આપી હતી, નમકીન, એ પણ બધું અમેઝિંગ હતું.
મોરિંગા પાવડર તમારો, સરગવા પાવડર, જે હું રેગ્યુલર રોટલીમાં છેલ્લા 4 વર્ષથી યુઝ કરું છું મારી ફેમિલીની હેલ્થ માટે, એ પણ અમેઝિંગ છે. તો હું બધાને રિક્વેસ્ટ કરીશ કે હું લગભગ છેલ્લા 4-5 વર્ષથી નોટ ઓનલી ઇન માય હાઉસ પણ મારા સો મેની પેશન્ટ્સમાં મેં એમનું બધું યુઝ કર્યું છે. અને હજી હું વધુ ને વધુ બધું યુઝ હું પણ કરીશ અને પેશન્ટોને પણ અવેરનેસ કરાવીશ. એટલે ખરેખર બહુ જ અમેઝિંગ છે. એકલું આ એક વર્કશોપમાં એમણે 1-2 રેસીપી આપી, પણ એમની રેસીપી અમે લોકો લગભગ હું 6-1 વર્ષથી જોઈન છું એમની જોડે, અને ઘણું બધું બહુ જ એમને મળ્યા પછી મારા લાઈફમાં તો બહુ જ ચેન્જીસ આવ્યા છે. બહુ જ ચેન્જીસ એટલે ઘણા બધા ચેન્જીસ. એટલે એમની ખાસ તો કોસ્મેટિક્સ વસ્તુઓ બધાને વાપરવા માટે અપીલ કરું છું કે ખાલી એમ લીમડાના પાવડરનું એમણે તમને કહ્યું ને બધાને 7 ડેઝમાં ગ્લો આવ્યો, પણ એમના જે સોપ હું યુઝ કરું છું, હું કોઈ જ કોસ્મેટિક્સ યુઝ નથી કરતી એમને આ યુઝ કર્યા વગર. તો મારા ડાર્ક સર્કલ્સ રિડ્યુસ થઈ ગયા, મારા સ્ટ્રેટિંગ વાળા હેર હતા 10-15 વખત મેં કરાયેલા, એ મારા રિપેર થઈ ગયા. બધું જ બહુ જ સરસ થઈ ગયું છે. તો હું ખાસ બધાને કહીશ કે એ યુઝ કરો. થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક યુ પારુલબેન. ફેશિયલ સોપ એકચ્યુઅલી આપણા બહુ હાઈ ડિમાન્ડેડ છે. હું બહુ માર્કેટિંગ નહીં કરતી ફેશિયલ સોપનું. પારુલબેનને મેં સ્પેશિયલી બનાવીને આપ્યા હતા. એની અંદર ફેશિયલના બધા જ ઇન્ગ્રીડિયન્ટ છે. ક્રીમ છે, જેલ છે, સ્ક્રબ છે, મસાજ છે, ટોનર છે, ક્લિન્ઝર છે, બધું જ ઇન સાબુના ફોર્મમાં. એવા લોકો માટે કે જેમની પાસે ટાઈમ નથી, ખાલી ફેસ વોશ કરવાનો ટાઈમ છે, વિધિન 1 મિનિટ તમારો ફેસ એકદમ નેચરલ ગ્લો કરે. અને બહુ જ હેલ્ધીએસ્ટ સોપ છે, ને ખાઈ જાય તોય વાંધો નથી, અને પ્યોર ઓઇલમાંથી બને છે. બટ મેં ક્યારેય એ માર્કેટિંગ માટે એટલે નથી મૂક્યા કારણ કે ઇટ્સ ટેક ટુ ટાઈમ ટુ પ્રિપેર, અને મને પોતાને એવું હોય છે કે હું જાતે જ બનાવું. પણ એકચ્યુઅલી બહુ બેસ્ટ રિઝલ્ટ વાળું છે. રિગાર્ડિંગ કોસ્મેટિક હું ઘણી બધી વાર કહું છું કે કેમિકલ કોસ્મેટિક ના વાપરવું જોઈએ. જ્યારે ચલો આ પ્લેટફોર્મ ઉપર એક વાત કરીએ કે જ્યારે કોઈ કોસ્મેટિક પાર્લર કે સલૂન વાપરતા હોય અને એમની પાસે જે કેમિકલ ટ્રીટમેન્ટો થતી હોય, દે આર નોટ નોઈંગ અબાઉટ યોર સ્કિન ટાઈપ. ઓકે, એને એ નથી ખબર કે તમારી બોડીમાં હોર્મોન્સ શું છે, તમારી લાઈફસ્ટાઈલ શું છે, તમારું મેન્ટલ શું છે. દે આર જસ્ટ આઉટર મેકિંગ. ઘણી બધી વાર દુલ્હનના વાળ એટલા બધા આઇનિંગ કરી દે કે વાળ બળી જાય, એટલું બધું હીટ ડેમેજ કરે, અને આ ડાયરેક્ટલી હીટ તમારા બ્રેઇનને અફેક્ટ કરે છે. આ વાળ ઇઝ જસ્ટ નોટ યોર બ્યુટી એન્ડ નોટ ઓન યોર કોસ્મેટિક, ઇઝ પ્રોટેક્શન ઓફ યોર બ્રેઇન. અને એટલું બધું ડેમેજ કરી કાઢે. એટલે બેટર છે કે ઇન્ટરનલ હિલિંગ સિસ્ટમમાં જાય. અને હું 100% શ્યોર છું કે આ 7 દિવસમાં બીજું કંઈ ફાયદો થયો હોય કે નહીં, તમારી સ્કિન તો ડેફિનેટલી ઇમ્પ્રુવ હોય છે. યુ ગ્લો વેરી ફાસ્ટ. અને સ્કિન છે એ સૌથી બેસ્ટ આપણું આભૂષણ છે. આપણે કોઈ ઓર્નામેન્ટ્સ મેકઅપની જરૂરત નથી જો તમારી સ્કિન હેલ્ધી હોય તો. એટલી કેમિકલ પ્રોસેસ તો ના જ વાપરવું જોઈએ. જેમના ઘરે દીકરી છે સ્પેસિફિક, બહુ આઉટર કેમિકલ કોસ્મેટિક ના યુઝ કરવા જોઈએ, કારણ કે સ્કિન કેન્સર જેટલા વધી રહ્યા છે, સ્પેસિફિક નેલ પેઇન્ટિંગ અને લિપસ્ટિકમાં જે કેમિકલ આવે છે બહુ જ ડેન્જરસ છે. એટલે 5-6 પ્રોડક્ટ મેં બહુ જ કમ્પાઉન્ડ ફોર્મમાં બનાવેલી છે. એક ફેશિયલ સોપ છે, લિપસ્ટિક પણ છે, બટ લિપસ્ટિક બહુ એટલે ખાલી જલ્દી શોપ હું જ છે. બનાવતી નથી. નેલ પેઇન્ટ નથી બનાવતા, નેલ સાઇનર બનાવીએ છીએ. હેર કલર છે, હેર માસ્ક છે, હેર મેકઅપ છે, આખો આખો. તમને કોઈને પણ સ્પેસિફિક સ્કિન રિલેટેડ ઇશ્યુ હોય તો ડેફિનેટલી મને કહેજો. ઓકે, એન્ડ થેન્ક યુ પારુલબેન ફોર શેરિંગ યોર રિવ્યુ, કારણ કે પારુલબેન ઘણા વર્ષોથી આ યુઝ કરે છે અને હું એમના લિપસ્ટિક માટે જ મેં તમારી સ્પેશિયલ બનાવી હતી. અને નિહલબેન, તમે મારા માટે જે 4 શેડ લિપસ્ટિક બનાવી છે, સ્ટીલ આઈ એમ યુઝિંગ. તમારી જે ક્રીમ છે એ યુઝિંગ કરું છું ડેફિનેટલી. અને એનું બી હું કહીશ કે જબરજસ્ત રિઝલ્ટ છે. એ લિપસ્ટિક લગાડ્યા પછી એટલીસ્ટ એ વોટરથી પી જતી નથી, અને કોઈ જ પ્રોબ્લેમ નથી. મારા જે હોઠ બ્લેક પડી ગયા હતા એ પણ નાવ અત્યારે નોર્મલ થઈ ગયા છે. આ નોન મેટાલિક મેટલ કન્ટેનમાં આપણે લિપસ્ટિક બનાવેલી છે, એ પ્લાન્ટમાંથી બનાવેલી છે, બીટરૂટના એક્સ્ટ્રેક્ટમાંથી. એ ધોઈ કાઢો, ઘસો તો એ ન જાય. એ તમારા લીપ ઉપર કોટિંગ આપે અને ઇફેક્ટ બહુ સરસ. ઓકે, સરસ, ચલો, ગુડ. નેહલબેન, અહીંયા રહેતા હોય જે તમારી નજીક નથી રહેતા, એ લોકોને આ બધી વસ્તુનો કેવી રીતે બેનિફિટ થાય? નો થાય એટલે જ હું નહીં કહેતી. ઓકે, બટ ધીસ મને ઇઝ માય કહેવા દો ને. હોબી. ઓકે, મને ગમે, મને લોકોને તૈયાર કરવા અને સારા દેખાતા હોય મને બહુ ગમે. એટલે હું બહુ મહેનત કરું પ્રિપેરિંગ કોસ્મેટિક, અને હું સરસ બનાવવાની ટ્રાય કરું, બિકોઝ બેઝિકલી આઈ એમ ડર્મેટોલોજિસ્ટ.
I am a Ayurvedic cosmetologist, homeopathic dermatologist, and I have also degree of the allopathic dermatologist. એટલે I have a huge impact on my system કે હું આમાંથી કંઈક સારું બનાવું. અને હું બહુ થોડું બનાવું, આમ તો 5000 જેટલી કોસ્મેટિક પ્રોડક્ટ આપણે બનાવીએ છીએ. But we are not on marketing base. We are not on selling and packing information. We are on the logo. You desire, we prepare. તમને જે જોઈએ છે અમે બનાવી આપીએ. આપણી પાસે 5000 વસ્તુ છે, બરાબર? બટ કોઈ આવતું હોય તો ડેફિનેટલી મને કહેજો. ફેશિયલ સોપ બહુ જ સારા હોય છે, બહુ જ બેસ્ટ હોય છે. હેર કલર, આપણા હેર કલર એવા છે કે હેર કલર લગાડવાથી વાળની લેન્થ વધે, હેરફોલ બંધ થઈ જાય અને હેરનું સ્ટ્રક્ચર ચેન્જ કરે. નેહલબેન, રોઝમરી શેમ્પુ ઇઝ ઓલ્સો યોર બેસ્ટ. બહુ જ મસ્ત છે. લગભગ મારા પેશન્ટ ડિમાન્ડ્સ કરે છે રોઝમરી શેમ્પુ તમારા. બહુ જ સરસ છે એ એટલે પણ. એ આપણે ગ્રીન મતલબ ગ્રીન પ્લાન્ટમાંથી બનાવીએ છીએ. બધા જ ગ્રીન પત્તાનો યુઝ કરીને શેમ્પુ બનાવીએ છીએ. એટલે કોઈ આવતું હોય તો કહેજો. સ્ટીલ શેમ્પુમાં મારો એવો પ્લાન છે કે હું શેમ્પુને પાવડર ફોર્મમાં કન્વર્ટ કરું, કારણ કે ફોરેન મોકલવું હોય તો ઇઝીએસ્ટ બને. અને પાવડરમાં તમે લિક્વિડ નાખી દો એટલે સીધું શેમ્પુ રેડી થઈ જાય. આપણું ડસ્ટિંગ પાવડર છે ફેસ વોશ માટેનું. ડસ્ટિંગ વેક્સ પાવડર છે, ખાલી ડસ્ટ કરવાનો, રેવા દેવાનું, પછી રિમૂવ કરી દેવાનું એટલે હેર રિમૂવ થઈ જાય. એવો ફેસ વોશ પાવડર છે. એટલે બધા પાવડર ફોર્મની રેસીપી છે. આ બધું હું ઘણું ઇનોવેશન કરું છું રિગાર્ડિંગ ધ કોસ્મેટિક, બટ ડેફિનેટલી આઈ વિલ પ્લાન કે તમને કોઈ ડેન્ડ્રફ નું પેશન્ટ હોય તો તમે મારા સનનું ડેન્ડ્રફ પણ ક્લિયર કરી આપ્યો. સિરમ, શેમ્પુ અને ઓઇલ તમે મને ડેન્ડ્રફની આખી કીટ મોકલી હતી, તો એ પણ હું રીકમેન્ડેડ કરીશ કે જો કોઈનો સિબોરિક ડર્મેટાઇટિસ કે ડેન્ડ્રફ બહુ જ ટાઈમથી હોય તો પ્લીઝ નિહાલબેનને કન્સલ્ટ કરો. બહુ જ સરસ. હું પોતે ડૉક્ટર છું. મેં કીટોકર્નાઝોલને બધું એટલું બધું એને યુઝ કરાયું, એ ના થયું અને એમની એક જ કીટમાં એનો ડેન્ડ્રફ ટોટલી ક્લીન થઈ ગયો. તો નેહલબેન, મને એવું લાગે છે કે મારે ખાલી સ્પેશિયલી ટ્રીપ કરવી પડશે. કોઈ આવશે જશે એવું નહીં, કારણ કે આઈ થિંક 2 બેગ બી ઇનફ નહીં થાય. દીપાલીબેન, હું એમના કોન્ટેક્ટમાં 6 વર્ષથી છું ને લગભગ મેં ઘણો બધી વસ્તુઓનો એમનો લાભ લીધો છે અને સ્ટીલ કન્ટિન્યુ. કોસ્મેટિક તો લિટરલી તમે નેચરલ વાપરો ને પછી તમને બહાર નહીં. મારું શેમ્પુ વાપરું છું ને 5 in 1. 5 in 1 શેમ્પુ એન્ડ કન્ડિશનર, ધેટ ઇઝ એક્સલન્ટ. 6 વર્ષ બસ એ છે અને કન્ડિશન એવી જ છે. As it is. That is amazing experience. મારો બહુ ફાઇન એક્સપિરિયન્સ છે. ઓકે, ચલો બીજા કોઈને. યસ કૃષ્ણા, બોલ. શું કહી દે નેહલ આંટીને કહી દે, યલો કલર નો સાબુ કેવો છે? મારા શિવનો ફેવરિટ છે યલો કલર નો શોપ અને ઓરેન્જ કલર નો બી. તું રોજ યુઝ કરે છે એ? હા, આંખોમાં બી નથી લાગતો. હે ને? હવે બોલે નહીં મને આંટી, બોલ ને. ચકલી ક્યાં ગઈ? ચકલી જઈ રહી. ચોકી સુઈ ગયા છે. સુઈ ગઈ. જો તું નથી સૂતો, એ સુઈ ગઈ છે. એક તો સર્કેડિયન રિધમ પ્રોપરલી ફોલો કરે. ટાઈમ થાય એટલે સુઈ જવાનું, ટાઈમ થાય એટલે ખાઈ લેવાનું, કોઈ ડિસ્ટર્બન્સ નહીં કરવાનું, અંધારું ગોતીને જતું રહેવાનું. અને અમાર શિવ તો ઊંઘે જ નહીં. નથી ઊંઘતો. શું નાનું બાબુ છે? હે ને? નાનું હતું ને. કરે તો શું બેટા? કરે છે. બારી એના ઘરની છે. ઓકે, ચલો બીજા કોઈને. નેહલબેન, મારે ક્વેશ્ચન. બોલો દિવ્યાબેન. નેહલબેન, હા બોલો. તમે જે નોનસ્ટિક માં સેવ કરવાનું કહેતા હતા, એર ફ્રાય માં કરી શકાય? એર ફ્રાયર નહીં, એર ફ્રાયરમાં કડક થઈ જશે. મેં કહી દીધી એર ફ્રાયરમાં, પણ એ કેવું થાય, એર ફ્રાયરને પ્રી હીટ કરવું પડશે પહેલા. 5 to 10 મિનિટ્સ પ્રી હીટ કરીને પછી કરજો. આ તો એકદમ તવી ફૂલ ગરમ કરીને સીધી પાડી જ દેવાની અને સીધી જ ઉથલાઈ કાઢવાની, તો તરત થઈ જશે. હા, બરાબર. અને બીજું મારે કોમ્બુચા હજી કાલે જ બન્યું. એટલે હવે 2 દિવસ લેજો તમે, દીપાલીબેન ને બધા હજી 2 દિવસ લેજો. દ્રાક્ષસ આજ બન્યું, 5 દિવસે બન્યું કોમ્બુચા. હા, એ થોડુંક એટમોસ્ફિયર ઇફેક્ટ આવી, બટ પછી કન્ટિન્યુ કરજો, કોઈ વાંધો નહીં. અને આજે બધી હું તમને
ક્રીમ નું ને એ કહેતી હતી પાર્સલમાં આવી શકે છે, ખબર છે ક્રીમ તમને? પાર્સલમાં આવશે, લિક્વિડ નહીં આવે. લિક્વિડ નહીં સાબુ આવે. આવી જશે. મેં આજે જ એક કેનેડાનું પાર્સલ કર્યું. 24 સાબુ જાય છે. ઓકે, એટલે પાર્સલ સાબુ આવી જશે. ક્રીમ શેમ્પુ નહીં આવે. શેમ્પુ નહીં આવે, શેમ્પુ તો નથી જ લેતા. અને હું પોસ્ટમાં મોકલું છું, એટલે પોસ્ટમાં તો આખું ઓપન કરીને જોવે એ લોકો. એટલે મારે કુરિયર કરાવવાનું છે ઘરેથી, એટલે હા, તો મને બીજું એડ્રેસ બધી આપજો, પણ હું ત્યાં વસ્તુ સાબુ છે. મોકલા. ઓકે, એટલે ક્રીમ ને એ બધું ત્યાં, શેમ્પુ નહીં જાય. હા, શેમ્પુ નહીં આવે. નેહલબેન નેહલબેન સાબુમાં ફ્લેવર આવે કે એક જ આવે કોઈ? ફેશિયલ સોપ છે ને એ સ્પેસિફિક ટોન સાથે બનાવેલું છે. એટલે એ નોર્મલી આપણે જેમ ફેશિયલ કરીએ અને ફેસ ગ્લો કરે, ખાલી એક ટાઈપનું કામ નથી કરતા, એકદમ હીલ કરે. તમારા ફેસ ઉપરથી ડાર્ક કાઢી નાખે, સ્કિનને બ્રાઇટ કરે, લિપને ઓપન કરે, ડાર્ક સર્કલને રિમૂવ કરે. તમારે રૂટીન ખાલી એનાથી વોશ કરવાનું છે, એટલે ડિટેનિંગ કરે. બાકી બધા જે સોપ બને છે આપણા, એ બધા સાબુ રૂટીન યુઝ માટે બને. જેમ કે અત્યારે સીઝન છે, બધા યુઝ કરે એમ એ રીતે. હા, કેસુડાનો બને કે જે તમે રૂટીન વાપરી શકો. અને આ નોન કેમિકલ નોન સલ્ફાઇડ સોપ છે, એટલે ઇઝીએસ્ટ હોય અને બહુ લાંબા સમય સુધી ચાલે. એક સાબુ હાર્ડલી 10 to 15 ડેઝ સુધી ચાલે, એટલું જલ્દી એ ફોર્મ ના કરે. બરાબર. પણ ફેશિયલ સોપ બહુ જ બેસ્ટ એટલે છે કે ખાલી ઓઇલમાંથી જ બને છે સાબુ. ઓકે, મને હું મેસેજ કરીશ, ચાલો ને. હા, મને મેસેજ કરજો. ઓકે, પણ એ 6 to 7 days ટુ પ્રિપેર વન સોપ. એટલે આજે મેસેજ કરશો તો 10 દિવસે કુરિયર આવશે. અને હેર કલર કયો છો? એ કલર બ્લેક જ કે બીજા કોઈ કલર આવે? બ્લેક અને બ્રાઉન બંને છે. ડાર્ક બ્રાઉન, બ્લેક અને બ્રાઉન. એટલે હેર જોવા પડે કે આપણે કલર ગમે મને તમારું વચ્ચેથી પાકી પાડી અને હેર મોકલજો. ઓકે. અને મારું આ દ્રાક્ષસો છે એ જ્યાં લગી પૂરું થાય ત્યાં લગી ત્યાર લગી લેજો, પછી બંધ એટલે કરજો. રૂટીન આપણે જે ડાયટ છે ચાલુ કરી દઉં. અને જે એપલ વાળું છે એ તો બહુ બધું પડ્યું છે. એ તો રોજ 2 ચમચી લેવાનું છે. ઓકે, રોજે કેટલો ટાઈમ સુધી? એ જ્યાં સુધી ચાલે ત્યાં સુધી. ઓકે, બોલો કમલબેન. મારે મારી મમ્મીએ આજે યાદ કરાયા હતા સાબુ. આ તો સાબુની ચર્ચા થઈ એટલે મને યાદ આવ્યું. એને કીધું છે કે મને કહેજે તારા બેનને કે મને સાબુ બનાવી આપો. મેં કીધું સારું, એટલે નીમ સોપ બનાવી આપજો. અને મને બી ફેશિયલ સોપ જોઈએ. અને લિપસ્ટિક તો મેં ક્યારનું કીધું છે, અમને નથી આપી તમે. હો, અમે તમારા કેટલા ક્લોઝ છીએ તો બી નથી મળી અમને. બધા જ ક્લોઝ છે, પણ કોસ્મેટિક હું જાતે બનાવું એટલે મને થોડોક ટાઈમ જોઈએ. અને લિપસ્ટિકમાં આપણે કોઈ કલર યુઝ નથી કરતા, એટલે સ્પેસિફિક બીટ એવા શોધવા પડે. બેબી બીટ જોઈએ, એકદમ નાનું બીટ હોય અને અંદર પિંકીશ વ્હાઇટ ગ્રો હોય, ત્યારે એનો કલર કાઢવો પડે. પણ હું ટ્રાય કરીશ. ચલો, હું તમને બનાવી આપીશ લિપસ્ટિક, કારણ કે એક લિપસ્ટિક તો 5-7 વર્ષ. મારી માટે બી એક લિપસ્ટિક. ધ્રુવી બી કે છે હો કે લિપસ્ટિક જોઈએ અને એને ટાઈમ જોઈએ છે તમને મળવાનું. મંડે ઓફિસ આવી જઈશ. ઓકે, મારી માટે બી એક લિપસ્ટિક કરી દેજો. લિપસ્ટિક ની સ્યોરિટી નથી લેતી, કારણ કે બનાવતા બહુ વાર લાગે. અને ઇઝ પ્રિપેર્ડ ફ્રોમ જ્યારે બી બનાવો ત્યારે આપજો. મને ખાલી મેસેજ કરી રાખજો, એટલે હું લખી રાખીશ. ઓકે, પારુલબેન ને કામ આપવું પડશે. પારુલબેન, નેહલબેન, હું પેશન્ટ અમને ખબર પડી. તમારી જે નેહલબેન, આઈટમ પણ વાપરી છે તો રિયલી બધી મારા સારી છે. પેશન્ટ્સ ને હજી મેં આ લિપસ્ટિક્સ ને એનું તો મેં નથી, પણ તમારા હેર કલર અને પ્રોટીન માસ્ક, રોઝમરી શેમ્પુ જે ધૂમ મચાવે છે, એની સામે હોમિયોપેથિક ના આર્નિકા બધું રિયલી હું બધાને રિકમેન્ડેડ કરીશ કે એમના રોઝમરી શેમ્પુ બહુ જ ફાઇન છે. હેર કલર બી બહુ સારા છે, ખરેખર હેર હેર કલર ગ્રોથ પણ એટલા બહુ અને સારા એમાં થાય અમે છે. લોકો એમની સાથે હેર વર્કશોપ બી કરેલું છે. હેર વર્કશોપ કર્યું હતું, એના પછી પ્રોટીન માસ્ક પણ બહુ જ ફાઇન એમણે બનાવીને મને પર્સનલ યુઝ માટે નહીં, હું મારા પેશન્ટ માટે બી યુઝ કરું છું. એ પણ બહુ સરસ છે. એટલે નોટ ઓનલી લિપસ્ટિક, પણ હું તો એમનું કોસ્મેટિક્સ બહુ જ બધું વર્ષોથી વાપરું છું અને સ્ટીલ એના જોડે જ છું, અને ખરેખર બહુ ફાઇન છે. બરાબર. થેન્ક યુ બેનના શેમ્પુ એક વર્ષે વાપરું છું. મને આ વર્ષે ટ્રેન્ડ જ નહીં થયો. બોલો કિરણબેન, અનમ્યુટ કરો. તમારો શેમ્પુ એક વર્ષથી વાપરું છું. દર વર્ષે શિયાળામાં જે ડેન્ડ્રફ થાય છે, આ વર્ષે ખબર જ નહીં પડી કે ડેન્ડ્રફ કેવો હોય છે.
સરસ, ચલો. થયું જ નથી. તમારી પારુલ બધી જાણે વસ્તુ કીધું તે મારા સારું છોકરાને થયું. આવે છે. ના, બાળક માટે બહુ સારું છે. નોન કેમિકલ કોસ્મેટિક બહુ જ હેલ્ધીએસ્ટ હોય છે. ને આ લિપસ્ટિક અને પેલું સાબુ એ પણ અમારે જોઈએ જ છે. લિપસ્ટિક ના કે તો પારુલબેન કોઈ તમે એક સાથે જાજી બનાવી દો. એક લિપસ્ટિક તમારે 4 થી 5 વર્ષ ચાલે. ઇઝ નોન મેટાલિક કલર લિપસ્ટિક આવે છે. બહુ બસ થઈ ગમે બનાવી આપો એટલે અમારે આવી ગયું. હા, આઈ વિલ ટ્રાય. ચલો, ડેફિનેટલી. ઓકે, હું પ્લાન કરીશ કે હું તમને એક સારી ગિફ્ટ આપી શકું રિગાર્ડિંગ કોસ્મેટિક. પણ મજા આવે. હા, આખો દિવસ અમે લોકો તો કેટલી વેફર બનાવી રોજે 8 દિવસ, ખબર જ ના પડી થાક લાગે એવો. નિહાલબેન, તમે સ્વર કોસ્મેટિક્સ પર થોડું વધારે હવે ધ્યાન આપો. કોસ્મેટિક તો મારા બધાને સપોર્ટ લઈને આપી દેવાનું છે સેલિંગ કરવા માટે બધાને. આ બધા જે ઘરે બેસીને ફ્રી હોય છે ને એમને આપી દેવાનું કે ચલો આ બધું તમે સેલ કરો, બનાવો અને હું તમને આપું. ઓકે, મારું મેઇન કામ બિઝનેસ. નેહલબેન, બોલો. પેલી આપણી ટીની બુક નું શું થયું? એક હું મિનિટ. રેડી છું. નેહલ મેમ, હું એની માટે રેડી છું. ઓકે, ચલો, ચેતનાબેન કામ કરશે આપણી જોડે કોસ્મેટિકમાં. હું બી કરીશ. અને પેલી ટીની બુક નું શું થયું? ટીની બુક અડધે પહોંચી છે. મને આપી દો, હું કરી દઉં ક્લેરિફાઈ. એ ભાઈ જતા રહ્યા છે એકચ્યુઅલી. બેંગ્લોર વાળા પણ કરીશું મેમ. હા, બેંગ્લોરમાં થશે. ઓકે, હું તમને ત્યાં પહોંચાડી દઈશ. મારા હસબન્ડ બેંગ્લોર છે. ઓકે, એટલે એવરી 15 ડેઝ ટ્રાવેલિંગ થાય તો હું તમને સામાન પહોંચાડી દઈશ. બેંગ્લોરમાં ચાલશે. ઓકે, અમે તૈયાર જ છીએ કરવા માટે. બોલો મેમ, કૃપાબેન. મેમ, મારે બધાને કેવું છે કે પેલું બાલ્ડનેસ માટેની તમે જે કીટ આપી હતી ને એ પણ બહુ સરસ છે. મારા હસબન્ડના હેર એટલા સરસ રીગ્રો પણ થયા છે અને હવે થોડા થોડા મોટા પણ થયા છે, સ્ટ્રોંગ પણ થયા છે. શું કેવું છે આંટી? રુદ્રાજ, તારો અવાજ નથી આવતો બેટા. હવે સંભળાય છે, બોલ. હે ને, બહુ જ મસ્ત છે. રોજ પીવાનું. ઓકે, તારે એને મેમ અપાય કંબુચા મારે અપાશે. ઓકે, બહુ જ કંબુચા બધું જ ખાય છે એ. કંબુચા, રાઈસ વોટર, સરસોટ, કિમચી બધું લે છે. અપાશે, કોઈ વાંધો નહીં. ઓકે ओके डन। चलो, सो होपफुली मैं आशा रखती हूँ कि आप सबने बहुत ही एंजॉय किया है दिस वर्कशॉप एंड फर्दर आपके गट को संभाल के रखना है। नाउ माय रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ओवर। आई built your gut microbiome in your gut. Now you have a responsibility to maintain, repair and rebuild अप टू 20 डेज। 20 डेज के बाद वो ऑटोमेटिक रीजनरेशन प्रोसेस में चले जाते हैं, वो दूसरा बन जाता है तो ऑटोमेटिक वो प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है, आपका फीडबैक प्लीज ग्रुप में शेयर कर देना। मैं गूगल रिव्यू डाल रही हूँ तो प्लीज एक रिव्यू भी डाल देना ताकि मुझे पता चले, मैं अपनी आगे की ऑर्गेनाइजेशन में शेयर कर सकूं। दोबारा मैं आपको याद दिलाती हूँ कि आपके आसपास कोई भी बीमार है, ऑटो इम्यून है, तो 1 वीक तक हमारे पास चांस है कि आई विल गिव द ह्यूजेस्ट डिस्काउंट ऑन दिस अवर रेगुलर फीस। ठीक है, अगर किसी को भी करना है, आपके जान पहचान में कोई भी है, पैसे की चिंता मत करना। इफ यू आर टेकिंग सम मनी बट वी आर ऑल्सो प्रिवेंटिंग सो मैनी मनी इन द फाइनेंशियल बजट। ठीक है, आपका ऑलरेडी बहुत सारे पैसे हम बचा रहे हैं। We are not taking money, we are just invest your health. So please continue on that. जो भी हमारे रेगुलर पेशेंट है, प्लीज एक्सरसाइज ज्वाइन करना, because exercise is always best to repair your system. So we will meet on Monday morning. Bye bye. Have a good day. Good night. Good night.